My friend Zainab Saeed is here. She is a relative as well as a friend, and she is for me the king of microfinance because I don't know anybody else who's into microfinance and fintech वगैरह सारा कुछ मैं आपसे ही आज समझने की कोशिश कर रहा हूँगा. तो कश फाउंडेशन के अंदर भी आप कोई तकरीबन 14 साल से काम कर रही हैं और उसके अलावा आपके एक दफ़ा गाड़ी के टायर चोरी हुए थे और मैं हंस रहा था, ये हमारी पहली मुलाकात थी, तो मैं उसके लिए आपसे आज पब्लिकली माजरत करना और चाहूँगा. ये आई थिंक 2005 बहुत ही पुरानी बात है. डीएचए में हुआ था कि नहीं जब आज? वो जो सिनेमा है वो सिनेमा भी नहीं होता था, वो एक ऑडिटोरियम होता था और मैं उस वक्त अपना अंडरग्रेड कर रही थी, तो Oh, wow. ये बहुत Yeah. पहले की So I was reading up on all these scandals because I wanted to make this more of a viral video. And I heard about the dark side of microfinance and a lot of these companies that are जिसकी ज़्यादातर जिनकी तहलका मचता है ना, कोई स्कैंडल निकलता है, वो IPO के बाद होता है. Have you noticed this? Yeah. Why is that the case? So I think IPO निकालने के लिए there's a lot of groundwork that needs to be done उससे पहले, but one of the things that people really want to see is a scale and growth. So I think one of the things that companies tend to not manage very well is to do the scale or sort of grow at that level with a lot of quality. Okay. So what ends up happening is that, you start off as a small organic setup and you're doing really good work. And now you've got these growth plans. But as you're growing the company, you're not able to maintain the kind of focus that you have on the customer or the kind of pulse, that you knew what was happening in the field with your staff, with your customer. So, companies tend to then, focus more on growth. And this is what we call in microfinance or in sort of generally in the development world, a mission drift. So, as long as they were small organic doing their mission, they were doing really well. But as they kind of set their eyes or set their sight on, really high growth rates, they are not able to grow the staff and the kind of, the relationship that they have with the clients in that manner. So that's why, and they end up exploiting the poor. So, I mean, the thing is that this word exploiting the poor is pretty loaded because what you really sort of call, what really is exploitation of the poor is a question, and like who's doing it, and what it means. So in the case of, I think you're talking about SK. Yeah, SK is the one, yes. मैं सोचा शाहरुख खान की कंपनी होगी लेकिन पता चला कुछ और ही था. नहीं. So उनका basically देखो बहुत ज़्यादा ये भी होता है कि उनकी केस में it wasn't just the exploitation of the poor in that sense. You also have to look at what's happening around them, right? Microfinance was largely unregulated in India, right? And there was a really strong growth spurt that they had, especially in AP, Andhra Pradesh, where this entire crisis kind of happened. They now have a very strong regulation there. But there were a few things that were contributing to, this high growth. So instead of these entities going and finding new clients, what was happening is that they were over leveraging the same clients. So, one entity would open in a certain area and then another would open in the same area. And then there was a lot of over indebtedness. Okay. Yeah? I want to understand over leveraging and over indebtedness a little better. Acha, so dekho, I come to you and so I think, I don't know how well versed your audience is in microfinance. I think let's take a couple of 100 steps backwards and then kind of sort of come here. थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि चलो, I'll speak about microfinance first and then we can sort of have this conversation. So microfinance generally is premised on the fact that there are people who have skill and talent, but they don't have access to finance. So they cannot set up their own businesses or, expand their businesses even if they have really small sort of business units, right? So what a microfinance institution in theory does is that it becomes like the intermediary. So it raises money from entities, and we'll talk about these entities, and then it goes and it does the groundwork, it does the appraisal for the specific client that you want to fund. And then it becomes the intermediary. So it borrows money and it lends money and it gets the money back and it gives the money back. So that's generally how it works, right? As you know, microfinance hai to bahut der se, but it was sort of, the idea kind of became popular and big post the Grameen Bank success in Bangladesh. And Grameen Bank, of course, was led by Dr. Yunus, who was a Nobel laureate. So once he got the Nobel Peace Prize for it, it became really, really big. I think this is 1996.
And so what he did essentially was he saw the same thing in his work in the field. He's an economist by profession, and he saw that people were not accessing debt, and because they didn't have access to debt or finance or resources, they were always constrained in where they were. And we all know that the Bangladeshi economy at that time was not growing at the rate that it is now. It's going really like at a very good rate right now. So he decided to get women together and give them money, and he put them in a group, and the group was responsible for, it was what you call in microfinance a social collateral or a joint or a solidarity lending model, jisme they would do the due diligence for each other, and then they would give them a loan, and they were individual loans, but all of them were responsible for making sure that everybody was paying. And because this was really new, they would do like bi-weekly or weekly installments from them, and then they would also meet every week. ये कमेटी में और इसमें क्या फर्क बन रहा है? अच्छा, कमेटी में लोग पैसे खुद डालते हैं. हाँ, ठीक है. आपने कमेटी में एक पूल इकट्ठा किया, सबने 10,000 डाला. 10 लोग थे, क्या कहते हैं, 10 लोग थे, 10,000 डाला, लाख रुपए की कमेटी होगी. और फिर वो बैलेटिंग करते हैं कि जी पहली बारी मूरू की है, दूसरी बारी ज़ैनब की है, एंड वो इस तरह निकलता है. तो वो उसके अंदर एट एवरी गिवन पॉइंट इन टाइम एक बंदे की कमेटी निकलती है. ठीक है. सो इट्स लाइक अ सेविंग अप फॉर सम पीपल दे हैव इंस्टेंट रिटर्न्स. In a microfinance loan, and in this group, what was happening was everybody got the money on the first day. Right? So everybody had access to that capital. It could be 10,000, 100,000, whatever. And then based on that, they would repay this in equal monthly installments or equal weekly installments or bi-weekly installments, depending on who was running the program. So that's where microfinance really started from. And the due diligence is to check what exactly कि ये जो पैसे मिल रहे हैं इससे आगे क्या किया जा रहा है? बिल्कुल. So देखो, अब देखो microfinance loans भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. ठीक है. You have productive loans which are for business, and then you have consumption loans also. So when you do productive loans, you are more likely to get a better return for the customer, because when that loan is going to go into a business, she or he is going to invest in the business, and the business will do better, and they will be able to earn an income out of it. Okay? If you do a consumption loan, that is also a need for the client, but it's harder for them to pay that loan back, right? So what we have learned at Kashf, and I've been with Kashf, as you mentioned, for the past 14 years, is that the due diligence bit is very, very important, right? So you need to do the due diligence. You need to go and understand what the client needs. You need to assess the debt burden of the household, and then decide what loan amount you are going to give them. Because you don't want to give them a higher loan amount than they can pay back. And you also don't want to give them a lower loan amount in the sense that unka kaam hi nahi hoga, right? So you have to go and do that appraisal. Now, it's easier said than done, right? Easier said than done because अगर आपको मैं कहूँ कि आप मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दें, तो आप मुझे अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दे देंगे. मैं उसमें देख लूँगी आपके कितने क्रेडिट्स हैं, कितने डेबिट्स हैं. उस हिसाब से मैं एक स्कोर निकाल दूँगी, जिसको हम क्रेडिट स्कोर कहते हैं. आप अमेरिका में रहते थे, आपको मालूम होगा, वहाँ पे ऑलमोस्ट सबका क्रेडिट स्कोर होता है, राइट? लेकिन क्योंकि जो गरीब घराने होते हैं या जो लो इनकम हाउसेस होते हैं, उनकी फॉर्मल इकोनॉमी के साथ बहुत कम लिंकेज होती है. उनकी ज़्यादातर कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनकी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज होती हैं, तो उनके पास इस तरह की कोई स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं होती. ठीक है. जब ये स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं होती, तो बैंक उनको जो इनफॉर्मल लेन देन है उसको कंसिडर नहीं करता, वो कर पाता नहीं है, बिकॉज बैंक्स के पास ये मैकेनिज्म्स ही नहीं हैं कि कैसे वो असेस करें. तो जो अच्छे माइक्रो फाइनेंस इदारे हैं, जैसे कि कश, क्योंकि मैं वहाँ काम करती हूँ, तो जो अच्छे माइक्रो फाइनेंस इदारे हैं वो ये करते हैं कि वो जाते हैं और वो ड्यू डिलिजेंस करते हैं. वो देखते हैं, वो उनकी कैश आउटफ्लोज देखते हैं, इनफ्लोज देखते हैं. 2-3 महीने नहीं, वो जाके एक ही दफ़ा करते हैं, क्योंकि देखें 2-3 महीने तो आप उनको इंतज़ार नहीं करा सकते. तो आप उनके पास क्या होती है, बुककीपिंग करते हैं, बुक्स नहीं होती, राइट? सो हमने अपना एक अप्रेजल का मेथोडोलॉजी निकाला है जो हम 2009 से इस्तेमाल कर रहे हैं. 2009 से पहले कश भी एक ग्रुप लेंडिंग मॉडल था, जिसके अंदर हम सॉलिडारिटी लेंडिंग करते थे. 25 खवातीन का एक ग्रुप बनाते थे, वो अपनी आपस में खुद ड्यू डिलिजेंस करती थी और हम बेसिकली उनको लोन देते थे, और हमारी उनसे मंथली, पहले बाई मंथली मीटिंग्स होती थी, फिर मंथली मीटिंग्स होती थी. लेकिन हमने देखा कि वो मॉडल बहुत अच्छा नहीं है फॉर मल्टीपल रीजंस, और उन रीजंस की हम अभी बात करते हैं, बट मैं ज़रा आपको अप्रेजल का तरीका पहले बता दूँ. तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, पहले तो हम थोड़ा सा अप्रेजल करते हैं, घर के हालात देखते हैं कि किस तरह का है, फिर बिजनेस को देखते हैं कि आपने किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है. सो वी लुक एट व्हाट द बिजनेस इज, वेयर इज द बिजनेस. देन व्हाट वी डू इज दैट वी हैव अ बिजनेस अप्रेजल एंड हाउस होल्ड अप्रेजल फॉर्म. Right? And they sit and they go through each of these cash flows that, they have. And generally when you're speaking to our clients, when you ask them something,
बड़ा रीसेंसी इफेक्ट होता है. सो अगर बिजली का बिल अभी रिसेंटली दिया होता है तो वो उनके जहन में आता है कि बिजली का बिल हमारा कैश फ्लो है, आउटफ्लो है. लेकिन अगर उन्होंने आप लास्ट ऑफ द मंथ जाओगे और बिजली का बिल अभी नहीं दिया हुआ तो वो उनके जहन में नहीं आता, राइट. सो हमने हमारा स्टाफ ट्रेंड है कि वो सारे जो कैश फ्लोज हैं उनको देखे, उसमें दीगर भी अगर कोई अदर्स भी हैं तो वो भी उसमें ऐड हो जाते हैं. सो हम उनकी इनफ्लोज और आउटफ्लोज देखते हैं, उससे हम उनकी एक नेट डिस्पोजेबल इनकम निकालते हैं घर की. हम उसमें ये भी देखते हैं कि क्या उन्होंने किसी और इदारे से तो नहीं कर्जा लिया हुआ, क्या उन्होंने कोई और अप्लायंसेज या कोई चीज़ तो नहीं कर्जे इंस्टॉलमेंट्स पे ली हुई, बिकॉज यू नो दैट्स ऑल्सो लाइक अ लोन. सो हम वो सारी चीज़ें हम करके हम उनका एक नेट डिस्पोजेबल इनकम का वैल्यू निकालते हैं और फिर उसके बेस पे हम उनको लोन फॉरवर्ड करते हैं कि आप कितना लोन कर सकते हैं, राइट. सो इसको कहते हैं डेट बर्डन निकालना घर का, तो वो हम निकालते हैं. सो दैट्स हाउ वी डू इट. नॉट एवरीबडी इज डूइंग इट दैट वे, एंड where you see people not doing it this way, you see higher levels of portfolio at risk and you see less impact. That said, we have 650,000 clients as we speak. Like 6,50,000 yeah, and clients. जी. ये ख़वातीन है सारी? सब ख़वातीन है, सब माशाल्लाह, वाह. We're the 5th largest in terms of the outreach in Pakistan, but we are the largest in terms of outreach to women in Pakistan, right? And so basically क्या होता है कि so basically डेट बर्डन आ गया हमारे पास. डेट बर्डन आ गया. तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हम ये कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम मेजॉरिटी 100% हमारी कंप्लायंस हो विद दिस, बट इक्का दुक्का 5% तक कि हमारे पास लीवे है होता है. कभी स्टाफ जो है सही प्रोसेस नहीं करता, कभी स्टाफ को जो है ना वो क्लाइंट जो है मिसगाइड भी कर देता है. So yes, we have seen cases where they've taken a loan and ostensibly it was for a business purpose, but they've used it in consumption. So that does happen, but that is not the norm. So 95, and so we have a separate department that actually goes and checks loan utilization. So एक हमारा अपना operations का जो team है वो जाके loan utilization check करती है. फिर हमारे पास एक field audit department है जो जाके देखता है और वो हमें report करता है. And what we've seen is that 5% is the largest that we've gone into misutilization of loan, which means that the loan was not used for the purpose that they asked. 5%. 6,50,000 ख़वातीन में से 5% ख़वातीन हो गई, कितनी हो गई? हाँ, मैथ कैलकुलेटर निकाला. मैं समझा आपकी मैथ मेरे से बेहतर होगी. कभी कभी होती है लेकिन इस वक्त नहीं आ रहा. So we've managed to do that. Okay. अच्छा, अब हम जाते हैं वापस to sort of the question that you raised on growth. राइट. सो देखें, अगर मैं एक बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर या लोन ऑफिसर हूँ, मेरा एक केस लोड होता है, ठीक है. मेरा केस लोड, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस historically have grown by adding number of people in their staff base. So let's say that I'm a loan officer and I have a caseload of 350 people at every given point in time who have a loan from me, right? Now there's an upper cap that needs to be there on this. Because if you make it too much, then I will not be able to do this due diligence properly. And there will be cracks and there will be leaks through those cracks of people who were not assessed properly. Upper limit on the amount of money you can give? On the number of people that I should be allowed to service. Okay, because that dilutes your attention. Yeah, and then also it dilutes the level of effort that I will be putting into doing these loan acquisitions. So what happened in the sort of in the case of Andhra Pradesh is that there was exponential growth. So if you look at the papers from that time, like they grew at ridiculous rates. And when they grew at ridiculous rates, a lot of the good practices for client acquisition were not followed. They were also doing group lending primarily. And a lot of the models in India right now are still group lending. They don't do individual lending. In fact, I was in Bangladesh in February, I think I mentioned to you. And all the programs that we met over there, and the biggest programs, they have a huge market. Microfinance numbers bahut zyada hain. All of them... They're the original story of success as well. So all of them were primarily doing group loans. And then they had some, 20% of their client base was individual loans, right? So in the group loan, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ग्रुप इकट्ठा होता है और ग्रुप इज सपोज्ड टू डू द ड्यू डिलिजेंस, राइट. उसके अंदर फिर उसमें जो है इश्यूज आते हैं. ग्रुप करप्शन हो सकती है. ग्रुप करप्शन होती है, रेंट सीकिंग भी होती है. मैं ग्रुप लीडर हूँ तो मैंने आपको लोन दिलवाया है, तो आप जरा मुझे 5% अपने लोन का दे दें, या आप मुझे 5,000 दे कट्स ले रहे हैं. हाँ, कट्स. वो देखिए ना, इंसान ऐसे, ह्यूमन नेचर ऐसी है, हर जगह कट्स होते हैं. सो ग्रुप्स में ये होता था. इनफैक्ट जो मैं आपको बता रही थी कि हमने शिफ्ट किया, तो हमने 2-3 चीज़ें देखी. एक, हमने ये देखा कि हमारा क्लाइंट हमें कहता है कि यार मैं नहीं मिलना चाहता इन 25 लोगों के साथ, आपके साथ. मैं आई डोंट वांट टू डील विद दीस 25 women, बिकॉज इनमें से 10-15 आर पीपल दैट आई नो एंड ट्रस्ट.
But 10 of them, we're waiting for them. I don't want to be responsible for their repayment, right? Then they also said to us that we've been working with you for 10 years, 15 years. When will you trust us enough to give us and to have an individualized relationship with us? And then, of course, the third thing was that, because the group was doing the due diligence, at the end of the day, we saw a lot of pipelining of loans. And what pipelining of loans means is मैंने कर्जा लिया, मैंने मूरू को दे दिया, मूरू मुझे जब तक पैसे वापस कर रहा है मैं आपको कर्जा वापस कर रही हूँ, लेकिन जब मैं मूरू रुकता है तो लोन तो मेरे नाम पे था, लेकिन सो डिफॉल्टर आप हैं, लेकिन मैं डिफॉल्टर बन जाती हूँ. हाँ, ठीक है. सो पाइपलाइनिंग बहुत सारी हो रही थी, या मेरे से कर्जा लेके ग्रुप के किसी और बंदे को दे दिया कि उसकी नीड थी, ये थी वो थी. तो हमने we were the first ones in 2009 to shift to individual credit appraisal backed lending for low income households and women. And there's really been no looking back since That's then. a mouthful, but it makes sense. You got it exactly right. So ये 2009 की बात है, और 2009 से हम individual loans कर रहे हैं, हमने group loans नहीं किए. And that really, I think, has been one of the reasons for our success and our growth. And we do very sort of measured growth. हम crazy growth plans नहीं रखते, क्योंकि हमें पता है कि हमें grow करने के लिए, देखें, पैसे तो अरेंज हो जाते हैं. IPOs के बाद क्या हुआ, पैसे तो अरेंज हो गए. या आप अभी देखें, आई थिंक $180 मिलियन एसके ने रेज किए थे अपने आईपीओ में. $180 मिलियन. बिल्कुल. अभी आज ही मैं सुबह खबरें पढ़ी थी, तो एक और बैंक डूब गया. पहले FTX डूबा था, अभी अमेरिका में एक और ये कोई क्रिप्टो का कोई वो तो एक्सचेंज थी FTX तो. पर उसमें भी ये होता है ना कि देखें, उसको इतने पैसे, होता क्या है कि जब पैसे रेज करना मुश्किल नहीं है इस दुनिया. अच्छा, नहीं है. I mean, है. मैंने अपनी वेब सीरीज बनानी, मुझे आप मदद कर दें, वो कोई पैसे नहीं दे रहा. नहीं, आप you have to show the numbers, right? And you have to show the growth plan. तो अगर आप किसी के पास जाते हैं वेब सीरीज और कहते हैं कि मैं आज ये वेब सीरीज बना रहा हूँ, लेकिन 10 साल में मैं लाख बना दूंगा, आपको जरूर पैसे मिल जाएंगे. हाँ. तो जब आप नंबर्स दिखाते हो तो फंडिंग मिल जाती है, लेकिन उसकी बैक एंड के ऊपर बहुत चीज़ें होती हैं. देखिए, आपने स्टाफ ट्रेन करना है, आपने स्टाफ को अपना ईथॉस सिखाना है, आपने स्टाफ को अपने मिशन के ऊपर ओरिएंट करना है, ताकि ड्रिफ्ट ना हो, ताकि मिशन ड्रिफ्ट ना हो, ताकि वो भी कर्जे को लेन देन का काम ना बनाए. लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन. हम ये बिलीव करते हैं कि अगर आपने माइक्रो क्रेडिट करना है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना है. आपको क्लाइंट की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करनी है, जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं. कर्जा दे के वापस लेना तो आसान काम है, थोड़ा बहुत, लेकिन है. मतलब वो एक आसान चीज़ है, लेकिन उसमें कम स्टेप्स. आप जाके नहीं, आप जाके कुछ गिरवी रखा लें, आपको लैटरलाइज करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. हमारी कंप्लीटली क्लीन लेंडिंग है. जो 6,50,000 क्लाइंट्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो 23 बिलियन का हमारा आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो है, ये कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड और क्लीन है. कोई इस पे कोलैटरल नहीं है, इस पे कोई चीज़ हमने उनसे ली भी नहीं है, राइट, एज कोलैटरल. सो इस तरह के उसमें यू हैव टू स्टे ट्रू टू द मिशन, बिकॉज दे ऑल्सो नीड टू बाय इन that they are doing this for their future, and that when they give a loan back and the institution does well, the institution will be able to help many others like them around them. Interesting. And when they hear something like $180 million have been given, and then they see money, and does that also, like, that sort of profit munafa khori kind of seep through the cracks of the whole organization, and where everybody's like, they got so much money, who cares, let's just take it. And you don't have any collateral tied in, so yeah, I don't think that's what happened with SK. Okay. I mean, they were pretty like cutting edge, and they were doing really well. थोड़ा सा तो मुझे लगता है उन बेचारों को नजर भी लग गई थी, but they were doing amazing work, right? They came up with a lot of innovative products like emergency loans, for example. So you're in the middle of a loan and बिजली का बिल आ जाता है, so they were the first ones to do emergency loans at a lower rate. Okay. So they were doing really well. I think there was also some sort of like the government and the regulation bit. So all of a sudden, जब आप $180 million रेज करते हैं ना, तो आप सबकी नज़र में भी आते हैं. फिर आपको हुकूमत भी पूछती है कि यार ये क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं कर सके ये रेज. ठीक है. फिर बाकी लोग भी आते हैं. फिर ये होता है कि मीडिया का भी एक रोल होता है. वहाँ पे मीडिया का भी काफ़ी रोल था. आपने शायद देखा हो, वहाँ पे फार्मर सुसाइड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है, ये जो डार्क साइड ऑफ वो है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो इसकी बात करते हैं. मैंने 2010 में ये देखी थी, सो मुझे थोड़ा सा याद नहीं, क्योंकि 2000 मैं halfway through it's in Bangladesh right now. हाँ, सो ये 2010 का क्राइसिस है, AP का क्राइसिस जो है ये, राइट. सो क्या कहते हैं, सो मीडिया भी उस पर अटेंशन करता है. फिर जाके उन्होंने उन लोगों की फैमिली से बात की जिनके घर में सुसाइड्स हुई थी, वो तो काफ़ी उस पर ना इमोशनल भी लोगों का हुआ, और उठना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं उठना चाहिए. लेकिन जब बाद में रिसर्च हुई, उन्होंने सुसाइड रेट्स देखे, तो दे एक्चुअली सॉ दैट द सुसाइड रेट्स
were the same throughout. And in years when the crop didn't do well, this is how it was. And that's really unfortunate. I'm not saying that that's a good thing or bad thing, right? But at the same time, like twisting the story to make it sound like the suicide is because of the microfinance debacle is a little unfair as well then. हाँ, but देखें सनसनीखेज बातें बिकती हैं. इसीलिए हमने भी फ्रॉड और स्कैम से शुरू ही उससे ही है. मैं टाइटल में भी लिखूंगा माइक्रोफाइनेंस स्कैम्स एनालाइज्ड. सो ये थोड़ा सा वहाँ पर ये भी हुआ, राइट? उसके बाद उन्होंने एपी में, आंध्र प्रदेश में बंद कर दिया माइक्रो फाइनेंस. तो देखें किसका नुकसान हुआ? फार्मर का, गरीब आदमी का. उस बंदे का नुकसान हुआ ना जिसको एक एक्सेस मिल रहा था, ठीक है. हाँ, देखें बैड एग्स या ब्लैक शीप हर उसमें होती हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी होती हैं, उनकी क्लाइंट्स में भी होती हैं. लेकिन at the end of the day, I think that after all of this crisis, like AP really lost out. They were 70% of all outreach in India, by the way. This is the biggest province with the biggest penetration. फिर उन्होंने कुछ regulation लगाई जो इतनी अच्छी नहीं है for the microfinance world. Like what? Like what can the government do with the policy and regulations? So I think they've put on a cap, an interest rate cap, which is always not sustainable, right? Because if you put an interest rate cap, then you are actually really reducing so you're reducing the level playing field that a microfinance institution will have, right? In the sense that देखिए माइक्रोफाइनेंस की ये आपने बात नहीं की है, मैं ही कर देती हूँ. माइक्रोफाइनेंस के ऊपर एक बहुत बड़ी क्रिटिक ये होती है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव. ओके, सो जैसे काइबोर से बहुत ज़्यादा होता है जो रेट होता है. काइबर, पाकिस्तान में काइबोर है इस वक्त, मुझे What is काइबोर? I'm sorry, I don't know. Is the कराची एक्सचेंज रेट, राइट? सो जो इंटरेस्ट रेट होता है आपका उसको काइबर कहते हैं. ओके. लाइबर होता है जो लंदन से लिंक्ड होता है. ओके. अब और चीज़ें भी आ गई हैं, सोफर शोफर, जिसकी आप एक्रोनिम का मतलब मेरे से ना पूछे, लेकिन हैं आप, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें हैं फाइनेंस, समझेंगे कभी हम बैठे हैं, हमें बुलाना पड़ेगा. मैं अपने जो है ना हेड ऑफ फाइनेंस को अगली दफ़ा साथ लेके आऊँगी, सारा कुछ सिखाएंगे वो आपको. लेकिन क्या कहते हैं, सो बेसिकली क्या होता है कि जो माइक्रो फाइनेंस जैसे मैंने आपको बताया वो इंटरमीडिएट होता है, राइट? सो वो क्या कहते हैं, वो पैसे रेस करता है, ठीक है. तो हमें काइबोर प्लस के ऊपर पैसे मिलते हैं जब हम किसी बैंक से पैसे लेते हैं. हम बैंक से पैसे लेते हैं, ठीक है. अभी हम आसान रखते हैं कि हम खाली कमर्शियल बैंक्स, लोकल कमर्शियल बैंक्स लेते हैं. हम और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे पैसे लेते हैं. हाँ, वो मैं आपको लाइक थोड़ा सा भी सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए इस पर हम अज्यूम करते हैं कि हम उनसे लेते हैं, ठीक है. फिर हमारा अपना स्टाफ है, हमारी इस वक्त 480 ब्रांचेस हैं, हमारे 4000 स्टाफ मेंबर्स हैं, राइट? उन्होंने फील्ड में जाना है, उन्होंने अप्रेजल करना है. हमारा पूरा जो है हमारा पेपरलेस सिस्टम है, ठीक है. तो हमारा जो बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है, जिसको लोन ऑफिसर बाकी लोग शायद कहते हैं, वो जाते हैं टैब के ऊपर, वो उनका फॉर्म भरते हैं, फिर वो उनकी नादरा वेरिफिकेशन करते हैं, वो उनकी MFCIB वेरिफिकेशन करते हैं. तो जिस तरह आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, अगर आप किसी कर्जे के लिए कभी अप्लाई करें किसी बैंक को, so they will run your name through an electronic credit information bureau. We have a specific one. We actually have 2 specific ones for the microfinance sector. So, so we run that. Then we, because there's a regulation that we need to do that. Then we do that. Then the first appraisal is the business development officer. Then the branch manager comes and does an appraisal. Then we call them to the branch. The branch does the disbursement. The disbursement is done through a banking channel. There's a cost of doing that through a banking channel. Then there's an entire piece of the collections. So collections don't happen in cash. Collections happen through alternative delivery channels. That has a cost. So all of these costs are added on top of the money that we. What is an alternative delivery channel? So for example, like you go to a Easy Paisa dukaan, or you go to Jazz Cash, or you go to Nadra E-Sahulat, or you go to UBL Omni. Those are alternative delivery channels. So fintech stuff. Not fintech stuff really, because yes, in a way, but fintech I think is more specific to just generally using technology to make financial decisions. Over here, what you're really doing is you've gone downstream. So what is happening is that, instead of going to UBL, and UBL, by the way, was the first to do these agent networks with UBL Omni. So UBL जाने की जगह आप जाते हैं अपने करियाने की दुकान पे, और वहाँ पर उन्होंने एक एजेंट बनाया हुआ है जिसके पास एक कंप्यूटर है, और वो आपकी OTC कर सकता है, ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन कर सकता है कहीं को भी. ठीक है. तो आप उसको 100 रुपया देते हैं और आप कहते हैं कश की इंस्टॉलमेंट पे कर दें, या आप उसको 100 रुपया देते हैं और कहते हैं मेरा भाई जो है वो भाई फेरू में रहता है, आप उसको ये पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, या आप ये 100 रुपये लेके मेरा बिजली का बिल पे करते हैं. तो वो ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन. सो वी यूज़ अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स टू गेट
The money collected back. Money collected back. So the client goes to the ADC. ठीक है. So in सब चीज़ों की of course cost होती है, right? There's a cost of business, there's a cost of operation, there's an admin cost, and then there's the cost of funds. So no microfinance entity can work on cost of funds only. Of course. Right? Yeah. And that's why. So you apply the interest on top of what they're giving back, right? Yeah. What's that percentage like? So it's 23% flat right now for Kashf. Okay. So if you, and so we're in the middle of the market. So some of the, there are some entities that do lower, and there are some entities that do even higher. So we're placed in the middle. So you're looking at effectively like 26% interest rate for the market completely. Okay. So जब आप एक इंटरेस्ट रेट कैप कर देते हैं, जिस तरह अगर अभी कैप हुआ होता है 15% से ज्यादा नहीं आप कर सकते, ये रेगुलेशन है. हाँ, अगर ये रेगुलेशन होती है तो देखें अभी काइबोर जो है वो बढ़ गया. आजकल काइबोर बढ़ रहा है हर महीने, हर 2 महीने बाद अनफॉर्चुनेटली डिस्काउंट रेट 19% हुआ है. ठीक है, तो फिर उसमें आपका जो एंटिटी है वो कैसे अपना पूरा करेगी, राइट? सो हमें अगर फॉर एग्जांपल होता तो फिर हमें ब्रांचें बंद करनी पड़ती, ठीक है, हमें अपने ऑपरेशंस का स्केल कम करना पड़ता है, या शायद इदारा ही बंद करना पड़ता, डाउनसाइजिंग, या फिर इदारा बंद कर दी क्योंकि वो वारा ही नहीं खा रहा. ठीक है ना, क्योंकि हम भी एक सस्टेनेबल सोशल बिजनेस है. हाँ, सही है. कि वी हैव टू बी सस्टेनेबल, बिकॉज जब हम एक नॉन प्रॉफिट हैं, लेकिन जो हम व्हाटएवर मनी वी मेक ऑन टॉप ऑफ आवर ब्रेक इवन, वी यूज इट टू एक्सपैंड ब्रांचेस. क्योंकि देखें जब आप एक ब्रांच शुरू करते हैं उसको 12 से 18 महीने लगते हैं टू बिकम सस्टेनेबल. तो वो शुरू से सस्टेनेबल नहीं होती. जो एक इशू है माइक्रो फाइनेंस के बारे में, जब लोग बात करते हैं ना तो वो बड़ा सिंपलिस्टिकली देखते हैं. वो कहते हैं कि जी 100 रुपये दिए, 100 रुपये वापस ले लिए. तो उससे वो ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि आगे ग्रोथ कैसे होगी, आगे चीज़ें कैसे बढ़ेंगी. ठीक है, इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें पाकिस्तान में लोग नहीं ये समझते कि आपने अगर $1 आज इन्वेस्ट किया या ₹1 आज इन्वेस्ट किया माइक्रो फाइनेंस में, वो वापस आया और दोबारा लगा तो उसके ऊपर मल्टीप्लायर होता जाएगा. सो वो 10 साल में अगर 10 दफ़ा रिसाइकिल हुआ है तो वो हर साल चले, अगर आप 30% की वैल्यू निकालते भी जाएं उससे, तो वो मतलब 10वें साल में ₹1 से ज़्यादा के लोन्स कर चुका होगा. क्योंकि ये इदारा, मेरे जैसा इदारा, कश जैसा इदारा, जिसका रिकवरी रेट है 99.5%. Right? So like these 650,000 women, 99.5% of them pay us on time. But there was this there was a 6% thing that you mentioned earlier. It's 0.6 then. That people who end up not giving back. 0.5. 0.5%. Yeah. Ooh. So I mean, so and this 100 rupees दिया, उसके ऊपर 23% लगा, तो 123 वापस आया. हाँ, equal monthly installments. Okay. और 12 महीने का लोन जनरली होता है, बट हमारे कंजम्पटिव के अंदर तो इट डजंट इवन मेक एनी सेंस फॉर पीपल टू टेक लोन्स, राइट? बिकॉज़ वो तो खा गया. देखें 2-3 चीज़ें हैं कंजम्पटिव लोन के अंदर, कंजम्पशन लोन के अंदर भी. और मेरी इंटरेस्टिंग, मैं अभी कराची में थी एंड आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अ बैंकर, और मैं उनको ये समझा रही थी कि देखें जो नीड है लो इनकम हाउस होल्ड की, हम ना बड़े पैटर्नलिस्टिक भी हो जाते हैं एज यू नो पीपल विद रिसोर्सेज के. व्हाट डू यू मीन पैटर्नलिस्टिक? मतलब उनको क्या ज़रूरत है, क्यों जाना है शादी पे? आपसे आके कोई उधार मांगता है, वो कहता है कि मैंने ये पैसे लेने, आपका कोई हेल्पर है घर का, वो आपसे कहते हैं यार मूरू भाई मुझे 50,000 रुपीज़ चाहिए क्योंकि मैंने किराने की दुकान डालनी है. और आप आके कहते हैं मुझे 25,000 रुपीज़ चाहिए क्योंकि मेरी जो साला है उसकी बेटी की शादी है क्वेटा में. आप क्या कहेंगे उसे? अपने बॉयज़ का तो मैं ख्याल रखता हूँ, लेकिन अगर नया हुआ तो कहूँगा चल है. सॉरी, बैठे हुए ना, वो कह नहीं सकता. नहीं, लेकिन मेरी कहने की मकसद ये है कि आप you'll be more likely to do the first, even if it's a larger sum, because you are going to be like, यार ये तो एक फजूल खर्ची है, right? And at your level, and given the income status and the income that you're earning, this is an expense you shouldn't be making. That's what I mean when I say that we get a bit paternalistic, because if you're not going to give him that 25K or that 10K or the 5K, whatever he or she requires, they will do it, right? They will go to the wedding, right? How are they going to fund going to the wedding? Is a good question to ask. How? Right? I don't know. Maybe they'll sell something. Maybe they'll take on debt from somebody else. Maybe they'll take on debt from somebody which is actually a really bad place to Unofficial loan sharks type exist करते हैं इस तरह की situations? जी, बिल्कुल करते हैं. And उनको पठान कहते हैं. और by the way वो हर level पे exist करते हैं. Like आप corporate, मतलब आप SME और आप बड़ी businesses से भी बात करें तो उस level पे भी हैं. अच्छा, उस level पे भी पठान चल रहे हैं. जी, वहाँ पे भी हैं.
बेचारे पठानों को क्यों इसकी रेस में ये तो नस्ली नाम रख दिया है फॉर ऑक्यूपेशन. मैंने अनफॉर्चुनेटली नहीं रखा, लेकिन so you can just call them money lenders, right? Loan sharks. And so these money lenders are essentially, you know, they have highly usurious practices in the sense that you give them if you take a loan from them, most of the time it's compounding interest. Okay. So you're only just paying back the interest. And at the end of the year, you're like, oh, I've paid you this much. They're like, oh, yeah, that you've paid out of the interest, but your principal is still standing. And that's how people get into the vicious loan cycle, this loan debt, right? Okay. But I'm not saying that everybody will go to the loan shark. I mean, that's the extreme situation. But I'm just saying that in that particular situation, that person is going to have to make that expense, right? And there are limited resources that they will have, right? But they will make that expense. So that's what I mean when I say that, you know, we tend to be paternalistic, right? And we tend to be like, अच्छा यार ये अच्छी need है इसकी, ये बुरी need है, तो चलो इस अच्छी need को तो हम fund कर देते हैं, बुरी need को नहीं करते, ठीक है? So one of the things that my boss also says, and I think Dr. Yunus said this for the first time, is that, you know, why can't we serve the poor with dignity? Why can't we give them choices, right? Why do we decide what is best for them? क्या बात, ठीक है? And that I think is something that I've really held close to in my own sort of head and like in my work at Kashf, because I work on products and you know बाकी जो मर्जी जो कहे, लेकिन we know that the customer is always right. And we know that the product will only work if it works for the customer. I mean, आप उस पे incentive दे दो, जो मर्जी दे दो. If it doesn't work for the customer, it's not going to work, right? So we offer services with a smile, with good customer care to our client. And that's really something that I'm very proud of, right? Because, you know, like little things like, why do you need a branch जिसके अंदर अच्छा paint हुआ हुआ है, ठीक है? Why do you need staff that, you know, is पढ़ा लिखा, dresses up nicely? You know, we have a dress code for all of our staff, for example, right? We have a compliance check for what the branch is looking like. Like right? This is a uniform dress code situation? No. Like the fact that they have to wear dress pants and a dress shirt or like shalwar kameez, you know, we have a dress code. And the reason it's important is because why do we want to not service them well? Why? Just because they're poor? Right? So this is a completely new way of looking at, you know, I mean, it's not a new way, but it's a different, like when I came to Kashf 14 years ago, I was, you know, I came with my own notions of, you know, why is the dress code important? What does it matter? We're doing loans, you know, like, theek hai, they're coming to us. I mean, they don't care if we're wearing, you know, bad clothes or good clothes, you know. Probably more relatable if we wear bad clothes. I mean, yeah, maybe, right? Do we want to be relatable? I mean, we try to be, right? But we also want them to feel that they're getting this loan because they're paying for it, right? They're paying for this service. So we have to make sure that the customer is happy. And happy in all ways. Like, you know, for example, we have customer satisfaction surveys that we do every year. We're actually in the middle of one right now. And one of the things we ask them is, how long did you have to wait at the branch? And if the number comes out to be, you know, more than what we have in our guidelines, we go back and we're like, what's happening? Why are they waiting? Right? And so the thing that I was talking about in terms of the alternative delivery channels, it'd be cheaper for us to get them to come to the office, to come to the branch to give us cash, right? And a lot of entities, do that. But it's cheaper for them to go to the Karyana. परचून की दुकान वो जो साथ है, हाँ. बिल्कुल, right? तो उनकी opportunity cost भी बच रही है, क्योंकि वो जितनी देर आके आ रहे थे कर्जा की किस्त वापस करने ब्रांच में, तो वो टाइम कम हो गया. साथ में उनकी एक्चुअल कॉस्ट भी बच रही है कि अगर वो बाइक पे आए या उस पे आए, रिक्शे पे आए, तो वो भी बच रही है. वो 6,50,000 लोग हैं और ये यहाँ पे दूसरी तरफ 4,000 है. तो 6,50,000 लोगों के लिए कन्वीनियंस क्रिएट करना ओवर 4,000 लोगों के कन्वीनियंस भी, और प्लस आई गेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. हाँ, प्लस यू हैव टू आल्सो बी लाइक, यू नो, इट हैज टू बी अ विन विन. अगर मैं सिर्फ अपने कस्टमर के लिए काम करूंगी ना, तो मेरा स्टाफ चला जाएगा, ठीक है ना? तो वो भी हाँ. So you have to create these opportunities in all businesses. And the thing is that we treat our work like a social business. We don't have shareholders. We don't pay dividends. What's the difference between social business, social enterprise, social institution? Like, I've read these interchangeably being used all over the place, and I kind of go like, and then there's this VC, like you were saying, impact funds. There's this VC impact funds. There's NGOs. There's microfinance, and there's so many ways. Like, one of the things that like crowds my mind is कि social impact आपने create करना है, आपने कुछ अच्छा करना है अपनी ज़िंदगी में, जो आप चाहते हो कि आगे लोगों पे असर करे. अब उसको
अगर आपने ऑप्टिमाइज करना है कि वो असर सही तरह हो, तो व्हाई माइक्रो फाइनेंस ओवर अदर थिंग्स? Not everybody thinks कि microfinance over other things. I think microfinance over other things. Yeah, well, that's why I'm asking you. पहले शुरू वाला सवाल का जवाब देते हैं, लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. सिर्फ ये होता है कि जो सोशल बिजनेस होता है एक नॉन प्रॉफिट होता है, ठीक है, और यूजली नॉन प्रॉफिट सोशल बिजनेसेस होते हैं. Okay. लेकिन कुछ नॉन प्रॉफिट्स होते हैं जो सस्टेनेबल नहीं होते, तो उनको आप सोशल बिजनेस नहीं कह सकते. सोशल बिजनेस ऐसी एंटिटी होती है जो अपना ब्रेक इवन भी करती है, शायद उसके ऊपर भी कुछ कमाती है ब्रेक इवन के, लेकिन उनका पर्पस जो है वो सोशल होता है, और जो वो ऊपर कमाते हैं वो वापस अपने बिजनेस में लगाते हैं एज अपोज टू पेइंग इट टू शेयर होल्डर्स. सो ये एक फ़र्क है. सो एक नॉन प्रॉफिट सोशल बिजनेस हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता. ठीक है, क्योंकि जिस तरह आपके अस्पताल होते हैं, बहुत सारे अस्पताल हैं जो फ्री में का इलाज करते हैं, वो आपकी ज़कात पे या आपकी डोनेशन के ऊपर चलते हैं, ठीक है, या वो जो एक नॉमिनल फ़ी लेते हैं, तो वो एक सोशल बिजनेस ज़रूर है, सॉरी वो एक चैरिटी या एक नॉन प्रॉफिट ज़रूर है, लेकिन शायद वो सोशल बिजनेस नहीं है, बिकॉज उनको हर साल सर्टन अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए टू एक्चुअली सस्टेन देयर ऑपरेशंस. सो सोशल बिजनेस इज सस्टेनेबल, इट्स वर्किंग फॉर एड्रेसिंग अ सोशल इशू, and it's reinvesting the money that it makes back into the business. These are the three kind of, for me, these are the three characteristics of a social business. ठीक है, got it. अच्छा. अब मुझे क्यों लगता है कि माइक्रो फाइनेंस सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है? Why don't you just give the money to the beggar who's like begging outside the car? Is that direct to the needy effective? देखिए, वो भी करना चाहिए. You do that? मैं पर्सनल बेसिस पे ज़रूर करती हूँ. जब कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान में मसला आता है तो हम एज एन इंस्टीट्यूशन भी करते हैं. आपको याद होगा यहाँ पे आग लग गई थी एक कम्युनिटी में, सेंट जोसेफ्स टाउन में. वहाँ पे हमने राशन का काम किया, हमने जाके लोगों की ज़रूर मदद की. फिर जब फ्लड्स आए हमने पर्सनली भी डोनेट किया, लोगों ने भी हमारे थ्रू डोनेट किया, हमने राशन किया. अभी हो रहा था पिछले वाले फ्लड्स में हमने 500 घर बनाए थे लोगों के लिए, राइट. सो आई मीन वो ज़रूरी है. और देखें, एज अ entity or as human beings living in a country which is a poor country, वो ज़रूरी है. लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है, वो थोड़ा फ़र्क है. देखिए, हर कोई माइक्रो फाइनेंस के ज़ुमरे में आएगा भी नहीं. आप बहुत गरीब इंसान को माइक्रो फाइनेंस नहीं देते क्योंकि वो वापस नहीं कर पाता. उनके लिए कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स होते हैं. पूरी दुनिया में ऐसे होता है. हमारे पास भी है एक कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम, और वो अपना काम कर रहा है. मैं चाहती अगर इसको बेहतर करना तो मैं उसको कंडीशनल कर देती कि आपको हम कैश ट्रांसफ़र देंगे अगर आप अपने बच्चे को फ्री स्कूल में भेजेंगे, राइट. जिस तरह इंग्लैंड में होता है. इंग्लैंड में आपको पता है पूरा कैश ट्रांसफर का प्रोग्राम है. अच्छा. बट इट्स कंडीशनल. इट्स कंडीशनल ऑन योर चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल. इट्स कंडीशनल ऑन यू बाइंग अ सर्टेन, जैसे फूड स्टैम्प्स होते हैं. फूड स्टैम्प्स का पैसे क्यों नहीं दिए जाते? फूड स्टैम्प्स इसलिए दिए जाते थे ताकि लोग उससे एक्चुअली खाना खरीदें और ड्रग्स या किसी ऐसी चीज़ में ना इस्तेमाल कर लें, राइट. सो एक पूरी, सो अगर आप पॉपुलेशन को देखें, और इट्स लाइक अ ट्रायंगल, ठीक है. द बेस ऑफ द पिरामिड, लाइक राइट एट द बॉटम यू हैव द डेस्टिट्यूट, यू हैव द अल्ट्रा पुअर, राइट. एंड फॉर देम माइक्रो फाइनेंस इज नॉट द सोल्यूशन, राइट. बट फॉर दोज अबव दैट, सो you have the working poor, transitional poor, people just on the poverty line, people just above the poverty line. For them, microfinance is a very, very great solution. Why I think microfinance is great, I was, I've led a privileged life, and I came back from college and I went to the field and I was talking to one of my first clients. So at Kashf, what we do is कि जो भी आता है उसको हम पहला हफ्ता फील्ड में रगड़ा लगाते हैं. सुबह से शाम वो फील्ड में गुजारते. मैंने भी थोड़ा सा देखा है क्या रगड़ा था वो एक ज़माने में. सिलाई मशीनें जब दी जा रही थी. Is the सिलाई machine thing still like one of the main things that women end up doing, like tailoring stuff? Yeah, it is. But we'll talk more about that. Okay, so we'll come back to it. Yes. Continue. yes, ठीक है. तो अगर हम बात करें तो मैं फील्ड में गई और फील्ड में क्लाइंट से पूछा कि क्या आपको फ़ायदा हुआ कर्जे का. तो उन्होंने कहा जी 3 साल से ले रहे हैं और अब मैंने अपनी बच्ची को जो है वो निकाल दिया है गवर्नमेंट स्कूल से. मैं उसको लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल में भेजती हूँ क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मैं खुश नहीं थी उसकी लेवल ऑफ एजुकेशन से. तो मेरे पास उनके लबैफ्स थे, हमारे जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म होते. तो मैंने देखा उनका एक लोन जो था वो 22,000 का था, उसके बाद उनका एक 25,000 का लोन था, उनका करंट लोन 30,000 का था. मुझे थोड़ी काफ़ी शर्म आई उसको देख के कि 30,000 के लोन से ऐसे ज़िंदगी अगर बदल सकती है. तो उस दिन के बाद से मैंने कोई महंगा पर्स नहीं खरीदा मुरू को, frankly. You know me, right? Because for the first time you realize that sustained access to credit that they are investing in their business can actually change such an important indicator, right? As opposed to if we were to give them a grant every month, we say कि हम आपको 4,000 दे रहे हैं to send your daughter to school,
right? The day the grant ends, the child is no longer going to school. Hmm. So for me, something that is sustainable, right, for on the institution's end also, because the fact that we charge them a rate or charge them a price for the service that we give them also gives us the ability to plan ahead, right? So on that, and then on the client's end, that she has now got a business that is generating income for her, right? And that is phenomenal, and that's why I feel that microfinance is the most impactful in my opinion. It's almost like you're making economically productive individuals out of the whole practice of microfinance, right? Exactly. And there are people on the fringes that, will not be doing this. There are people who are going to use this, for domestic use or whatever. But by and large, if you're able to get people to earn incomes and increase their incomes, even if that increase in income means that they're just able to keep up with inflation, right? Even if that is possible, that's a big, like a big red golden star for microfinance, right? How's that affected things like current inflation rate and like the economic downturn? अभी इससे कश्फ का कोई बुनियादें तो नहीं हिलना शुरू हो गई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है, and touch wood, I hope that doesn't happen. This is not real word, but okay. लेकर आनी पड़ेगी, एहसान भाई लेकर आए. अच्छा, क्या कहते हैं? So देखो, इन्फ्लेशन ना उसका एक डबल एज स्वॉर्ड होती है, ठीक है? दो तरह से अफेक्ट करती है वो एक इदारे को, और फिर हम क्लाइंट की भी बात करेंगे, क्लाइंट उसका हिस्सा ही है. सो सबसे पहले ये होता है कि आपकी जो कॉस्ट है हर चीज़ की वो बढ़ जाती है. सो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल देखें, मेरा स्टाफ जो है वो फील्ड में फिरता है, वो अपनी ऑफिस में नहीं बैठता, तो मैं उसको एक ट्रैवल अलाउंस देती हूँ जिससे वो अपना फील्ड का काम कर सकता है, ठीक है? साल की शुरू में आपको पता नहीं याद है कि नहीं कि क्या था पेट्रोल का रेट, और अब आप देख लें कि क्या है, ठीक है ना? तो मेरी हर चीज़ की एक्सपेंस बढ़ रही है, ठीक है? मेरी बिजली का बिल भी बढ़ रहा है एज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है? मेरे लोगों के कम्यूट का बिल भी, और मेरे जो स्टाफ है उसकी डिस्पोजेबल इनकम भी कम होती जा रही है साथ साथ, क्योंकि वो भी तो खा रहा है, खरीद रहा है, ठीक है? सो आपकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो बढ़ रही है, उसके साथ माशाल्लाह काइबर चलता जा रहा है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़ रही है. तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं, राइट? अच्छा, अब उसके बरक्स या उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हमारा क्लाइंट जो है उसकी भी डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है. तो उसका क्या मतलब है कि उसको बड़े लोन्स की जरूरत पड़ रही है, और आपको अपनी परसेंटेज उस लोन पे भी कम करनी पड़ी, या वही रखते हुए भी आपको मिल रहा कम ही है अल्टीमेटली. एग्जैक्टली, मतलब परसेंटेज तो हमने नहीं बदली, लेकिन अभी तक नहीं बदली. एक दफ़ा बदली थी, ये 23 पे आया है. पहली दफ़ा मेरा इस इंस्टीट्यूशन को जब मैंने ज्वाइन किया था तो ये 20 पे था, फिर हम 22 पे गए थे, और फिर वापस 20 पे आ गए थे, बिकॉज वी आर वेरी कॉग्निजेंट दैट दिस इज सपोज टू बी अफोर्डेबल. और ये अब हमने 23 पे किया, जैसे मैंने आपको बताया. तो क्या कहते हैं, सो हम अपना रेट नहीं चेंज कर रहे, अभी नहीं किया, और अभी हम चाहते हैं कि हम ना करें, आगे देखें क्या होता है. बट सो उसको ज़रूरत है कर्जे की, उसकी भी नीड बढ़ रही है, बट उसका ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, द एबिलिटी फॉर हिम फॉर हर टू अर्न इज ऑल्सो गोइंग डाउन. सो it's a bit of a like they need the money, the demand is increasing, the supply could be getting restricted for multiple reasons, but right now we are keeping up with the measured growth plans. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी हमेशा, so we do like a 3-year plan, then we do like a 1-year plan, then we do a 6-monthly plan, then we do a quarterly plan. So like on our numbers we're constantly sort of seeing the situation. एक ज़माना था अच्छा जब 5-year plan बनाते थे और वो 5 year का वैसे ही चलता था. अब वो ज़माना नहीं रहा. तो मतलब 5 साल का कुछ पता ही नहीं. हाँ, बस 3 साल का प्लान फिर हमने बनाना शुरू किया. अब तो 3 साल वाला प्लान भी हमें लगता है कि बहुत लंबी मुद्दत है 3 साल. तो खैर वो हम बनाते ज़रूर हैं, पर उसमें ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज गॉन विद द कैवियट दैट वी विल बी एडजस्टिंग बेस्ड ऑन द सिचुएशन. Metrics as they come along, right? Yeah. So we are going, we haven't changed our growth plans, we are growing, and alhamdulillah हमारा जो portfolio at risk है, जैसे मैं आपको बताई थी, वो भी नहीं बढ़ रहा. So things are, going, but it's a tough market. It's a tough time for everybody. It's a tough time for us as individuals. It's a tough time for our staff. It's a tough time for clients. So, there are things that we're doing to, make sure कि चीज़ें पीछे ना रह जाएं. So, for example, हमारी अभी क्या कहते हैं, जो रिफ्रेशर हो रहा है स्टाफ के साथ पॉलिसी का, उसके अंदर हम उनके साथ वापस अप्रेजल पे आ रहे हैं कि यार अप्रेजल कैसे करना है, इन हालात में अप्रेजल कैसे करना है. क्योंकि देखें जो उसकी कैश फ्लोज थी ना, अगर आज मैं कर्जा रिन्यू कर रही हूँ किसी का, और उसकी कैश फ्लोज मार्च 2022 से मार्च 2023 में बहुत फ़र्क हो गए हैं. Like going back to the basics in terms of making sure that the credit underwriting, the credit decisions are good quality. So we're working on that.
Then we were because training. stressful times ends up affecting the credit decisions in a bad way. So, for example, you can't assume that how much they were spending on food last year is the same that they're spending this time. So you need to investigate it further, I see what right? you're saying. Because revise karo, or jab evaluate bhi kar rahe ho, don't take things, on face value, probe them and things like that, right? Because just because पिछले साल उन्होंने ये कहा था, you have to probe it, right? And then generally reaffirming कि क्यों हम कर रहे हैं ये क्यों ये टाइम्स आया के लिए नहीं कर रहे, ये क्रेडिट अंडरराइटिंग के लिए हो रहा है, right? मतलब ये it's not going through the motions. This is the most important thing that you're doing as a staff member. So like refreshing that. Uske alawa, for example, we're refreshing on with our supervisory staff how to detect fraud. How to sort of see early warning signs, things like that, right? And this is all preemptive. So we try to be preemptive in the way that we are sort of, we don't want to be like, oh, acha, ab fraud ho gaya, to ab kya karna hai? Yeah, ab portfolio risk बढ़ गया, तो अब क्या करना है? So we're trying our best to be, like like proactive and preemptive in what we're doing. So we are inshallah hoping to close this year at 700,000 in June. And we are people are increasing the amount of people. This is the amount of people. से 650,000 से 7 की तरफ जा रहे हैं. Yeah. ये increase कैसे, कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ तक आया, in how many years? So I think the first loans that Roshane, who's the founder of the institution, was the first loan officer. Legendary woman. She did 25 loans in 1996 or 1998. How many? 25. 25. Not K, 25. 25 loans. In 1996. Yeah. And the journey's been progressive till 2009 when we changed our lending methodology. So, and since you joined? I joined at 275,000 or something, 14 years ago. But those were group loans. It's almost tripled by then. Yeah, those were group loans. Now these are individual loans. Oh. So it's been, There's a lot more due diligence involved now. Yeah. So like when I joined Kashf, एक loan officer का 625 का case load होता था. वो 625 clients को service करता था. हाँ. और फिर जब हमने methodology change की तो हम 150 पे बड़ी मुश्किल से आए. Right? अब हम उस पे भी आ गए हैं 413 या 417 है, I think हमारा latest. उस पे हमने कैप लगाया हुआ है कि 415 है. 625 के अंदर भी ग्रुप के लीडर से ही खाली बात कर रहे हैं. So वो 25 के ग्रुप, उसके होते थे 25 के ग्रुप. हाँ. तो वो हर दिन का एक ग्रुप होता था. 25 दिन. तो वो बंदे तो तकरीबन उतने ही हैंडल कर रहे हैं अभी भी, या उसके वो इंक्रीज हुई है? बिकॉज़ इंडिविजुअल्स अब ग्रुप्स में तो हम काम ही नहीं कर रहे हैं. काम ही नहीं कर. तो अब वो हर जैसा पहले वो जाता था और वो बाजियों ने 25 बाजियां इकट्ठी की होती थी एक घर में. अब वो 25 बाजियों से मिलता है instead of that one transaction group, right? So so उस वक्त then we kind of we consolidated, and since then it's always been. So you were there for the group loan changing to the appraisal process. That was That must have been quite a thing. Yeah, it was an amazing time for me as a newbie in development and newbie in microfinance. I think I learned more in that year than I have in It all happened in 1 year? 1 year. Achha. 2008 to 2009, and we and just again I had just started working at Kashf, and I'd just come back from college, and bubble. अच्छा आते साथ ही ठग चेंज हो रहा है. चलो अच्छी. तो वो जो bubble में से निकलना, I think was really great for me as a person and a human being, and like that learning. I don't think accelerated learning का कोई और level था वो. Every day you and then it was basically a all hands on deck approach. और उस वक्त I was an associate. मैं आज एक मैं chief strategy officer हूँ by the way Kashf की. मैं उस वक्त एक associate थी, ठीक है? And just because, so what I also really liked about the organization was that they saw potential and they weren't like, oh ये तो associate है, इसको क्या पता. हर चीज में घुसे हुए और मॉडल टाउन में तुम्हारे घर के साथ वाली गली में. आप किधर है? आप बहुत से हैं? नहीं, अब जौहर टाउन में हमारा ऑफिस है. ओके. हमारा ऑफिस होता था ये वो बरकत मार्केट के पीछे, ठीक है? जिस पे मैं आया हूँ, जिस पे आप आए हुए हो. और हमारा जो आपका पुराना घर था उससे एक गली दूर मेरा घर था, मॉडल टाउन वाला, ठीक है ना? अब उससे उधर के बीच में 5 मिनट का रास्ता था. तो जब ये चीजें हो रही थी, चेंज हो रही थी, तो वो जो गेट था ना गार्डन टाउन और मॉडल टाउन के बीच वाला, वो बंद हो जाता था. I hate that gate. I mean you hated it, but I'm just trying to tell you कि पता ही नहीं चलता था कि आप ऑफिस में कितनी देर के लिए. मतलब 9 बजे वो गेट बंद होता था और बहुत दफा ऐसे होता था पूरा घूम के मड़िया से जाना. बड़ा अफसोस होता था वो मड़िया से जाने का. But I'm just trying to tell you that that's how intense it was. How much time you spent there? So 9 to 9.
I mean, yeah. 12 hours a day. I mean, not every day, but there were days like that. And then, you know, there's this first 3 months iske baad that I went to the field every day to this one specific branch in Sheikhupura, रोज. रोज, ठीक है. और हम जाते थे सुजुकी डब्बे पे, मैं और मेरा एक कॉलीग थे, वो अब डिफिट के लिए, UK8 के लिए, जो भी उसका अपना नाम है, FCDO है, आई थिंक उसके लिए काम करते हैं. वो बहुत बदलते हैं, बट वहाँ काम करते हैं. एंड वी नेवर फॉरगेट दैट टाइम, यू नो, that we would just be like in that dabba going on, like, you know, the road. The formative years. Yeah, I mean, really learned so much. So how does like this Udari thing kind of tie into this whole Kashf? Say, ये अच्छा सवाल है. उडारी के बाद और भी बहुत सारे हुए हैं. अच्छा, हाँ, अभी एक चल रहा है, उसमें मीरा भी है. उतना बड़ा. ओह अच्छा, जो वो नदीम बेग के साथ है. Yeah. Nadeem Beg's an amazing director. Yeah. I hear the drama's doing really well as well. Yes. Not as big as Udari though. You know, Udari is the biggest. Yeah, I mean, I think Udari was just like, yeah. Is it as big as Udari? I haven't checked the numbers. I just randomly said that. No, it is pretty big. It is pretty big. It's big, no? Also, at the time of Udari, there was no competition, quite frankly. Right? Abhi to कुछ और भी टीवी शोज हैं जो काफी प्रॉब्लमेटिक कंटेंट के साथ हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे. कश. I was really surprised at your knowledge of like content creation, character writing. You got into that like pretty in depth, out of nowhere. हाँ, उसकी भी बात करते हैं, बट थोड़ा सा पहले बताऊँ कि हम ये क्यों करते हैं. सो बेसिकली हमने पहले सिर्फ माइक्रो फाइनेंस किया, ठीक है. माइक्रो फाइनेंस है कि हमने माइक्रो लोन्स किए. फिर हमने रियलाइज़ किया कि माइक्रो लोन्स के साथ हम इंटरवेंशंस और भी करें, न्यूमरेसी के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, एजेंसी के ऊपर. तो जो हमारा ग्रुप था उसके अंदर जब हमारी मीटिंग होती थी तो हम इन चीज़ों के बारे में बात करते थे. हमारे 5 promises होते थे कि हम अपने आप से जो promises करते थे अपने clients कहते थे करें कि I will use the money productively, I will have agency, I will have control over the money, I will make these decisions, I will separate between my needs and wants and really spend money for my needs and not spend it on my wants and reinvest in my business, invest in my household. इस तरह की ना बहुत सारी हमारी interventions. ये psychology type चल रही है. हाँ, मतलब like capacity building और capabilities की जो हम उनसे बात करते थे. फिर क्या हुआ जी कि जब हम individual पे गए तो हमने रियलाइज़ किया कि ये वाला पीस हमें अब किसी और तरह डालना पड़ेगा. तो फिर हमने जो है अपने प्रोग्राम के अंदर 2-3 चीज़ें ऐड की. एक तो हमारा माइक्रो लोन्स का प्रोग्राम चल रहा है, वो तब से चल रहा है. उसके साथ साथ हमने फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन, बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग शुरू कर दी. ये ऑप्ट-इन ट्रेनिंग्स हैं, ये हमारे क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें हम उनके साथ काम करते हैं कि बजट कैसे बनाते हैं. अच्छा, अब आप ये भी अपने जहन में रखो मोरू कि हमारा only 1 in 5 clients is actually educated or has been to school. Okay. So all of this is done in a adult pedagogy, Paulo Freire kind of way, where we're doing storytelling, we're doing pictures, like on the needs and wants. I loved this game that we used to play in our previous module called Snakes and Ladders, but it was financial snakes and ladders. So when you came to मैं अपनी दोस्त की शादी के लिए सेट खरीदूं, it was actually a snake and you came all the way down, right? And you played it in the group and it was... And like of course you also see that these women are not playing games, they are like really, really time poor generally, they have very few avenues for, like doing any downtime. So I mean, they used to love these games, right? Because you're like gotiyon ke saath, hum unke saath game khel rahe hain to help them understand what, the value or the knowledge that we're trying to sort of get at. So we do that. पर उसके साथ साथ हमने भी देखा कि ख़वातीन जब खुद समझ भी जाती हैं और ख़वातीन को खुद एजेंसी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, उनके पास कोई स्पेस नहीं है, राइट? आपने उनको वॉइस तो दे दी, लेकिन जब उनके पास स्पेस नहीं है उस वॉइस के लिए, क्योंकि जो लार्जर इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ओप्रेसिव है, काफ़ी पेट्रियार्कल है, तो उसके लिए हमने कहा कि हम कैसे कम्युनिटी लेवल पे और सोसाइटी लेवल पे एडवोकेसी कर सकते हैं. तो हमने फिर शुरू किए जी सोशल थिएटर परफॉर्मेंसेस. ठीक है, हमने शुरू से ये कर रहे थे. सोशल थिएटर परफॉर्मेंसेस में क्या होता है कि हमारे 5 लोग होते हैं, वो एक थीम हम हेड सेंट्रलाइज्ड बनाते हैं, उस थीम के ऊपर जो है वो सोशल थिएटर परफॉर्मेंस करते हैं. छोटे से किसी शादी घर में या किसी हॉल में हम ये कम्युनिटी लेवल पे कर रहे होते हैं. क्लाइंट्स और उनके घर वाले आते हैं और उसमें हम सोशल इश्यूज़ को टैकल करते हैं. लाइक मेरा फेवरेट जो मैंने बहुत दफ़ा कोट पे किया है, बट आई लव दैट वन दैट वी डिड, वाज कॉल्ड टीकू. उसमें एक लड़की होती है, वो एक टीका इजाद करती है जो लोगों को जेंडर सेंसिटाइज कर देता है. ठीक है ना? लो जी. इसको उर्दू में आप क्या कहेंगे जेंडर सेंसिटिविटी को? ये एक बहुत मुश्किल जिनसी सिंफी हसासियत नहीं, क्योंकि देखो हसासियत सेंसिटिव से आता है. हाँ. अब हम सेंसिटाइज की बात कर रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल है. इसकी हमने की भी है, वो मुझे है असल में की भी है. हाँ, क्योंकि हम हर चीज़ उर्दू में करते हैं. अभी हम एक सर्वे डिज़ाइन कर रहे थे एक और एंटिटी के लिए,
तो वहाँ पे हम एक बैरोमीटर करना चाह रहे थे कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो फिर सारे सवाल उर्दू में, पहले इंग्लिश में हमने लिखे, फिर उनको उर्दू में किया। तो वो मैं बता दूंगी, वो है मेरे पास एक्सटेंसिव नोट्स, को बहुत मुश्किल होता है इसकी। उनको समझ आ जाती है क्योंकि हम अगर सिंफी हसासियत कह देंगे, हमें तो पता है हम जेंडर सेंसिटिविटी को उर्दू में ट्रांसलेट करें, लेकिन आगे ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट भी करते हैं। सो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको ब्रॉडर थीम के ऊपर करें और नॉट ऑन द मीनिंग। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे अब एक्विटी और इक्वालिटी में आप उर्दू में फ़र्क बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमने निकाला था, मुझे सॉरी इस एग्जाम मिल गया था, ओके। आई मीन हमें बनाना पड़ा। सो वो एक सिंगल वर्ड नहीं था, वो एक सेंटेंस था कि सिन्फी बराबरी इज़ इक्वालिटी, राइट। और क्या कहते हैं, सिन्फ की बेसिस के ऊपर, मुझे सॉरी उसकी उर्दू भी याद नहीं आ रही, सिन्फ की बेसिस के ऊपर तफरीक और या तफरीक ना होना, या पास्ट एक्सपीरियंसेस, इस तरह की हमने उसकी यूज़ की थी। पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर से जो इनक्वालिटी बनी है उसको एड्रेस करने के वो एक्विटी कहते हैं। सो इस तरह की चीज़ों को जो है ना इस तरह करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो खैर मैं बता रही थी आपको कि हमने सोचा कि हम वो करते हैं। टीकू में उसने वो जेंडर सेंसिटाइजेशन का टीका बना लिया, घर पे बाप को लगाया, वो बर्तन धोने शुरू हो गया। बाजार जाते हुए जो लड़के उसको कैट कॉल करते थे, उनको लगाया, तो उन्होंने कहा आओ बहन हम तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ेंगे, ठीक है ना। और जो उसकी क्योंकि वो जो हमने स्टोरी बनाई थी उसमें जो खातून की जिसकी वो बेटी थी वो हमारी क्लाइंट थी, तो उसमें हमने ये भी दिखाया था कि वो ना एक मिडिल मैन के साथ काम करती है और मिडिल मैन उसका हमेशा फ़ायदा उठाता है क्योंकि उसकी मैथ नहीं अच्छी। तो उसको लगाती है तो कहता है कि ओ बहन तुम्हारे पिछले पैसे भी बढ़े हैं, वो भी वापस। So, you know, like, ये तो सच्चाई का टीका भी बन गया साथ साथ basically, but you know, हाँ, yeah, right. And so I actually attended जो हो रहा था, and the audience was in fits, right? Come on. Because you know theater, it gets people, and you know, like these are. It just got me, just the plot. I was laughing. Yeah. And it's got these like. It's a really basic thing. मतलब वो कोई शाशाराबील टाइप प्रोडक्शन नहीं होती, यहाँ से लाइट आ रही है, ये आ रही है, मतलब 5 बंदे खड़े होते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर स्टेज पे कोई म्यूजिक नहीं होती, या म्यूजिक की छोटे बूम बॉक्स से आ रही होती है, पर इट्स वेरी इमर्सिव एंड इट्स वेरी पावरफुल। फिर हमने देखा कि जी कम्युनिटी के ऊपर तो हम ये कर रहे हैं, और ये हम कोई 1000 परफॉर्मेंसेज 200 परफॉर्मेंसेज हर साल करते हैं, 5 साल में हम कोई 1000 के करीब ये करते हैं। हमने कहा कि अच्छा क्या चीज़ें को हम बार बार चला सकते हैं, इनकी वीडियोस बनाई, तो वो कॉन्सेप्ट वो उसकी जो है ना पुल वो नहीं थी। तो हमने कहा अच्छा व्हाई डोंट वी डू एजुटेनमेंट, ठीक है, विच इज़ लाइक यूज़ यू नो लाइक द एयरवेव्स टेलीविजन to work for these issues. And so we started looking, and we were able to secure some funding for it, secure some money for it. So the first one we actually did was not Udari. The first one we did was called Rihai. And it was the issue of child marriage that we took up in there. Okay. ठीक है. And उसमें नुमान इजाज थे, बुशरा अंसारी नहीं, समीना पीरज़ादा थी, उसमें मारिया वास्ती थी, उसमें बहुत अच्छी टैलेंटेड, हाँ, मतलब हमने बहुत पहले, क्योंकि हमने कहानी पे काफ़ी फोकस किया और उस कहानी को हमने ऐसा बनाया कि लोग उसको ना कर सकें। और नुमान इजाज की एक्टिंग इतनी अच्छी मैंने लिटरली कभी नहीं देखी जितनी मैंने रिहाई में देखी। आई डोंट नो इफ यू हैव द टाइम टू गो। Yeah, he's done this web series where he's played homosexual, I think. Oh yeah, he's just I heard such a about wonderful that. I haven't actor. seen it. Yeah, I mean, but you know, like usse pehle I'd always seen him being like this hero, you know, like romancing. In that he is like, you know, the epitome of masculine, toxic masculinity. ठीक है ना, in that particular show. Wow. So we did that. We got really good response. What also ended up happening is post that, and I'm not saying that there was a causation, but post that the Sindh government actually instituted a Age at Marriage Act. And it was after the series had been sort of aired, right? Oh. So basically what happens is that when you think it had effect, or was it I mean, people talk about these things, right? And it was a very well-made show. It had the star cast, right? So it had a poll. It was on Hum TV. You know, people were watching it. It wasn't as popularly successful as Udari, for sure. But it was very nuanced. It was very good. Mehreen Jabbar was our director for it, by the way. Oh, she's so, you amazing. know, like it was, yeah. So we did that. Then we got a lot of very good critical acclaim on that. And, you know, this happened. Then we were sitting, we had to do another one. And this is when the Kasoor incident on the Zainab case. No, Zainab was later. So those are 12 या 13 में एक कसूर में रिंग डिस्कवर हुआ था, इससे पहले. I've made this exact same mistake with Nadia Jamil was talking about the Kasoor incident. I said the Zainab case. She said no, not that. There was so tab hum, you know, we were all just kind of, you know, like shocked out of our minds, and we're like, let's do it on this, right? And so then we started working. Let's do it on child sexual abuse and pornography.
No. Ring? No? I mean, उसमें था for sure, जो वो वाला केस हुआ था कसूर वाला, but we were like, how can we raise awareness on this? Okay. Sorry. So that's how Udari came about. You know, we worked with Hum TV again, and this whole thing sort of came out, and it was a roaring success. And you know, things like anecdotally, people have said that, you know, somebody came and said to us, वो doctor हैं, she's like, कि मेरे पास patient आया, उन्होंने कहा कि इनका Udari वाला issue है. Because there isn't a name for it. You know, there isn't a name for child sexual abuse. Or there isn't a name for child abuse because it's not always sexual. Right? And then again, you know, post this, there was legislation moved which removed child sexual abuse in a separate category. So it's not just fornication. It has a worse penalty now in the penal code. So I'm not saying that these were causations, but it gets the conversation started, right? And then they also stupidly tried to ban the show, right, in the 4th or 5th episode. And that's really? Why? I mean, was the whole thing? So they didn't ban the show. They sent Hum TV a show cause notice. Is it too graphic or something? Pemra, that you're, you know, I don't remember the wordings, quite frankly. Yeah. But what that did was everyone went on social media and said, I support Udari. And then everybody wanted to watch Udari. Everybody and their mother and father and sister wanted to watch Udari. जितना बैन करे उतना सक्सेसफुल हो जाता है चीजें तो वो ये हुआ, वो 4th या 6th एपिसोड थी. उसके बाद तो it was just no looking back. It did phenomenally well. Yeah. उसके बाद even Ehsan, the main actor. Ehsan Khan. He did a good. He won a bunch of awards. The series won like 7 awards or so. Yeah. Right? Uske baad, we did another very interesting TV show, which not a lot of people know about, but it was short stories, and it was called Aakhri Station, and it was a story of these 7 women. It was a mini series. Who directed Udari? Before we move on, so Udari was directed by Ihtisham Saab. Yeah. Old school. He also did. We recently Dam Mastam. He directed that as well. Yeah. So it was Ihtisham Saab, and So Aakhri Station was directed by our friend मंटो वाले जो हैं. मैं बताऊंगा आपको. हम सफर वाले जो हैं, मैं तो सरमद खुसट जी उन्होंने डायरेक्ट की. जबरदस्त, अमेजिंग. उसके अंदर क्या हमने किया जी, उसमें ये था कि 7 खवातीन एक ट्रेन के डब्बे में मिलती हैं. 7 की कहानी है और हर एपिसोड हम 7 खवातीन की, और उनको जो स्ट्रिंग अलोंग कर रही हैं वो सनम सईद हैं, वो भी थी उसमें. जबरदस्त. और सनम एक sort of like higher income group से belong करती थी, and she had mental like depression and things like that issues. जो उनका issue था was on mental health. So we like, you know, had a number of stories in that, and they were beautifully made. You know, Sarmad Khusar does a great job. So that we did. Then we did one on human trafficking. Yeah. Called Dil Na Umeed To Nahi, which also ended. उसमें उमैर थे, उमैर राना थे, उसमें नवीद रेहान थी. उसमें ये जो हमारी हैं बहुत पॉपुलर आजकल हुई हुई हैं. देखें, मैं थोड़ा सा ना हट गई हूँ फ्रॉम द मीडिया वर्ल्ड से. आप मुझे कोई खैर है, नोबडी इज रिमाइंडिंग. नहीं उसके अलावा इवन एट काश, राइट. सो मैंने काफी हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशंस किए हैं, तो उडारी और आखिरी स्टेशन. एनी ऑफ दिस राइटिंग प्रोसेस वर यू इन्वॉल्व्ड इन इट? So for Udari, yes, because we did the character sketches along with, of course, the writer. But we wanted it was very, very important for us to have the characters built in a way that they didn't seem like aliens, right? So what ends up happening on a lot of TV shows, and you'll see it, कि जो बुरा होता है वो इतना बुरा होता है कि आप कहते हो कि ऐसा बंदा तो मुझे जिंदगी में मिला तो मैं ऐसे बात ही नहीं करूंगी, right? शुरू से ही पता है हमें विलेनस कैरेक्टर, शक्ल से पता चल रहा है. एग्जैक्टली. सो जब हमने रिसर्च की, और एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है, NGO है साहिल के नाम से, जो चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ के ऊपर ही काम करती है. जब उनकी हमने तहकीक देखी और रिसर्च देखी, तो हमें पता चला कि in most cases a person who is the abuser is part of the circle of the parents. It is not a stranger. चाचा मामा टाइप हरकत होती है. कज़न, चाचा, मामा, you know, इस तरह से. और you know, उसके अलावा हमने काफ़ी रिसर्च की, तो हमें प्राइमिंग का पता चला कि बहुत ये इट्स नॉट लाइक मिलते साथ ही ऐसे कुछ का होता है. प्राइमिंग होती है और एक पूरा you know, तो हमने मीरा नायर एक्सप्लोर्ड दिस इन मॉनसून वेडिंग. I think so. Yeah. बड़ी लड़की थी जो ऑलरेडी मोलेस्ट हो चुकी हुई थी बाय मामू, और एक छोटी बच्ची को वो प्राइम कर रहा था उस वक्त. बिल्कुल. और वो बड़ी लड़की जो थी, वो उसने पहचान लिया कि ये इसको अब प्राइम कर रहा है, तूने मेरे साथ तो किया साले, अब मैं नहीं इसे करने दूंगी. सो वो सारा हमने रिसर्च किया, और फिर हमने कैरेक्टर स्केचेस में मदद की कि ये you know, इस तरह का होना चाहिए कि ऑब्ट्यूसली
It can't be a complete stranger also, because you know जब एक complete stranger होता है तो फिर आप कैसे अपने बच्चे को protect करते हो child sexual abuse से? आप stranger से नहीं मिलने देते. एक बहुत बुरा आदमी होता है जो बहुत बुरी हरकतें करता होता है तो उससे भी आप प्रोटेक्ट कर लेते हो. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ostensibly या obtusely बुरी हरकतें शायद ना कर रहे हो. तो फिर हमने उनके साथ इस पे काफ़ी काम किया, हमारी काफ़ी बैक एंड फोर्थ हुई, बिकॉज हम चाहते थे कि ये ऐसा कैरेक्टर हो जो रिलेटेबल हो, जो बिकॉज आप जब उडारी देखते हो तो शुरू में एहसन खान से बेहतर कोई कैरेक्टर ही नहीं आपको लगता. अब कहते हो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, एंड देन लेटर you know the story kind of develops into what it does. So yeah, we so like I was saying, I've done a couple of horizontal transitions at Kashf. So till Akhri Station I was fully involved in all, so I know all the characters and the names and things, but with Dil Na Umeed To Nahi and then Kuch Unkahi, I'm not very well versed. But again, the process is the same. When we do a television series, there's a creative workshop at the head office where we get lots of people who come together and they talk about the issues and they choose an issue. Then they do a larger plot. Then they do the subplots, and then the writer starts working on it. So that's the process that's followed. And so they did the same for Dil Na Umeed To Nahi, and now they did the same for Kuch Unkahi, and there's another one in the works right now where we've done the creative workshop. Of course, so this is now a part of the thing that you guys do. So as long as we're able to secure funding for it, which we have been lucky enough. Is the same channel of banks and stuff like in the microfinance world? So no. This is a grant. This is grant based. So the banks and all don't do grants. They do on lending, or they sort of forward debt to us. So that's the work that we do with them. But this is a grant based. So we were able to secure a grant from the government of Canada for the last two that we're doing. Oh. Yeah. All the way from there. Oh, yeah. Achha, there's a lot of grants that people look at. I remember Sabia Samar's film Khamosh Pani was also funded by a European grant. Yeah. So one has to look at these. This is for my selfish purposes. I'm trying to figure out where the grants are going to come from. Okay, interesting. So now you step back from all of that and you're back into the Kashf game of microfinance. I mean, I was doing that also, but yeah, I'm doing products more now, market development, strategic positioning and things like that for the company. I'm still involved. So as being part of the management committee, I mean, all of these things are, you know, I'm involved in them, but not at the micro meso level that I was earlier. But the process is the same because, you know, Roshan is leading the show. So, you know, everything is done in the same way. And there's like new people that are keep coming into Kashf that are like potential of coming up, and you see that as well? Yeah. Okay, so interesting. In all of our field positions, it's 100% internal growth. So if you meet our regional managers who are like the highest level on the field teams, you will meet them and they'll be like, oh, we've been at Kashf for 22 years. We started as business development officers, then we became branch managers, area managers, and now we're regional managers. So there's a big culture of internal growth and retention and career progression. And another thing, which is really great about Kashf, is that we have a 50% gender ratio. So 50, exact रखा हुआ है. Exact रखा हुआ है और हर tier पे रखा हुआ है. अच्छा. So ऐसे नहीं है कि हम कहें institutional 50% है. तो क्या कहते हैं सारे जो entry level staff हैं उनको 100% खवातीन करके आगे से आदमियों को grow करें. हाँ. So हर branch manager tier पे 50% है, area manager tier पे 50%, RM tier पे 50% है, management पे 50% है, head office पे 50% है, और board पे actually 70% है. So we have 70% women on the board of directors. वहाँ पे हमने जरा कब्जा रखा. देखो agenda setting बहुत. How much does this patriarchy play a role in like the women that you give the money to for your microfinance? I mean, उनका ये होता है कि वो अपने husband से छुपाती हैं जो उनने लोन लिया है या इस तरह कुछ? नहीं, ऐसे नहीं होता, छुपाती नहीं है, लेकिन जब आप उनसे पहली दफ़ा मिलते हो ना, आप कहते हो कि बाजी आप कुछ करते हो. सो हम अपने हर क्लाइंट को बाजी कहते हैं, राइट? सो दैट्स समथिंग दैट यू माइट हैव सीन कम अप. बाजी कुछ करते हो? नहीं. कोई आमदनी का जरिया? नहीं. फिर हम कहते हैं अच्छा क्या, हाँ मैं ये करती हूँ, ये मैं पैकेजिंग करती हूँ, ये मैं मसाले पैकेज करती हूँ. और जब हम उनके साथ बैठ के जब जायज़ा लेते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि दे आर द मेन income contributors to the house. Acha. You know, the patriarchy or, you know, this disenfranchisement. Yeah, it's for women also, right? It's coming from within them also. So, you know, but a few years into their journey with Kashf, they're definitely much more confident. They definitely have much more agency. Of course, there's a lot more that needs to be done on the agency bit. But, you know, they're doing their own businesses, they're making those decisions, you know, or even if they're joint decisions, they're equal part of those decisions now. That must
थोड़ा बहुत हिला देती होगी वो द पावर पोजिशनिंग विद इन द फैमिली. बिल्कुल. तो हाउ डज दैट अफेक्ट द रिलेशनशिप्स? इज दैट So we actually do like these third-party impact assessments, where one of the specific questions that we ask are interspousal relationships, how they've changed. And for a majority of them, they say that they've stayed the same. And for the ones that say that they've changed, we ask why have they changed, like changed for the better. They're like, देखें सबसे ज़्यादा लड़ाई किस चीज़ पे होती है? पैसे पे. अब पैसा ज़्यादा हो गया तो लड़ाइयाँ कम हो गई हैं. But mobility और इस तरह के issues अभी भी बहुत ज़्यादा हैं rampant. हमारी क्लाइंटेल में भी और जनरली भी आप देख लें तो ख़वातीन की मोबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है. और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ को मुझे इनकशाफ हुआ था कुछ महीनों नहीं 1.5 साल पहले. आज कि क्यों ये मोबाइल फ़ोन के ऊपर इतना क्या प्रॉब्लम है. भाई बहनों को नहीं यूज़ करने देते, आदमी बीवियों को नहीं यूज़ करने देते अपने मोबाइल, बाप बच्चियों को नहीं करने देते. तो इट्स एक्चुअली मोबिलिटी. It's actually another representation of mobility, because once you have internet and mobile in your hand, then you don't really have to physically leave. And so men become gatekeepers to not just their physical mobility, but also their virtual mobility. And that, of course, has an impact on how much digital can help women, right? Because digital at one point was the cure to everything, right? We were all leapfrogging into this new future, but unfortunately that hasn't happened. Yeah. And one of the reasons is that women actually don't have access to technology also, or they don't even have access to the vessels that could connect them to technology, or that access is they're gatekeepers to their access. So yeah, so that's that. But like just going back to Udari and the kind of work that we do, so there's one, financial services, then there's capacity building for clients, then there's social advocacy, and then we do a lot of work on social safety nets also. And by social safety nets, we mean fallback mechanisms in case of a crisis. And one of the big issues that we saw with our client base was कि कोई बीमार होता था तो जो प्रोग्रेस पिछले 2-3 सालों में हुई होती थी वो प्रोग्रेस जो है वापस आ जाती थी ग्राउंड जीरो के ऊपर, राइट? बिकॉज क्या होता था कि काम नहीं कर सकते, एसिड बेच दिया, ये कर दिया. तो वी आर द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस इन पाकिस्तान and micro insurance in Pakistan. So all of our clients have health insurance, which is a family cover. Each of the people in the family get a cover of up to 35,000 in inpatient procedures. सेहत कार्ड का लिमिट थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये क्योंकि इसके लिए वो पैसे देते हैं और हम जुबली को जो हमारा पार्टनर है और अस्पतालों को अकाउंटेबल रखते हैं, तो कस्टमर सर्विस इज़ मच बेटर. सेहत कार्ड की थोड़ी सी फ़र्क मेथोडोलॉजी थी, वो एक फ़र्क एंटिटी के साथ काम करते. तो हमारे कोई 2 मिलियन के करीब लोग हैं, क्लाइंट्स और उनकी फैमिली मेम्बर्स, जो इसमें रजिस्टर्ड हैं इस वक्त. अच्छा. और जो आप क्लेम्स देखो तो 70% क्लेम्स ख़वातीन के हैं, 30% आदमियों के, जबकि जो इनरोलमेंट है 50-50 है. सो इट्स अ रियली जेंडर सेंट्रिक प्रोडक्ट that we've been able to create. This health insurance that we... And 70% women have more health issues than... the use of the product. The use of the product. Yeah. Okay, so you got to get into the whole like whether... Yeah. So they're not... they have the same... It should be equal, right? Yeah, but see, the thing is that what ends up happening where you have like a... So if a product is designed and it's gender blind, what ends up happening is that there are more men that make use of it. But because we were very gender intentional with the design of this product, we actually have more women taking it up. And we had a group of researchers. But why were you so gender intentional in the first place? That's what we're there for, right? Our mission is, Don't want to be drifting from that. No drifting. No drifting from that. Yeah. So, yeah. Wow, that's a lot of things you guys are doing. How do you see this in India के अंदर जो अब fintech का like everything's got a QR code. They supposedly like पान भी अगर बिक रहा होता है तो वो QR code पे बिक रहा होता है. Actual cash is not being used as much. It's like 3 times the cost to go through like one of these tolls अगर आप cash इस्तेमाल करें. But if you use the QR code or the tags that they have, it's 3 times less. So is that like a future that Pakistan के अंदर हमें नजर आएगा होते हुए? So देखो, थोड़ा सा अगर हम इसकी बात करें कि कैसे वो कर पाए, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन की थी कुछ सालों पहले. ये क्या होता है डिमोनेटाइजेशन? होती है उन्होंने पैसा खत्म कर दिया, सब कुछ डिजिटल कर दिया. ठीक है. So जब पैसा ही नहीं था लोगों के पास, कैश ही नहीं था. मेरी तो वीडियो डिमोनेटाइज हो जाए मुझे रोना आ जाता है. अच्छा नहीं सर, ये कौन सा डिमोनेटाइज कर रहे हैं? ये फर्क डिमोनेटाइजेशन की बात है. बहुत अप्रोर हुआ था, लोग लाइनों में खड़े थे, लाइक जो भी. सो उन्होंने एक स्विच बनाया अपना, उसको उन्होंने इंटरऑपरेबल बनाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा POS पे काम किया. देखो अभी क्या मसला है कि अगर आप एहसान भाई को कहते हो कि यहाँ से जाके वो कुछ ले आएँ और जैज़ कैश से या ईजी पैसा से ले आएँ,
तो आप उनको तो भेज देते हो, लेकिन उस वेंडर के पास इजी कैसा या इजी कैसा या जैस पैश वो नहीं होता वो नहीं होता। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इकोसिस्टम बना दिया। हाँ। ठीक है, वो इकोसिस्टम अगर बन जाएगा तो काफ़ी फ़ायदा होगा और उसके बहुत सारे पॉजिटिव मल्टीप्लायर्स होंगे। अभी क्या होता है कि जब आप कैश आउट कैश इन करते हो ना, उस पर पैसा बहुत लगता है। ठीक है, तो अगर आप किसी को 1000 रुपया देते हो तो उसके ऊपर 10 रुपये कटते हैं, तो उसके पास एक्चुअली 990 रुपीज़ आ जाते हैं, राइट। एंड दिस इज़ जस्ट द ट्रांजैक्शन फ़ी। बहुत दफ़ा जो एजेंट होता है वो उसके ऊपर से भी पैसे लेता है, बिकॉज एक एजेंट्स की मोनोपोली भी बन गई है। पाकिस्तान में ये होएगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहुत स्लो है प्रोग्रेस। और जब ये होगा तो उसमें फिर वन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड और वन ऑफ द एक्सक्लूडेड विल बी वुमेन। क्योंकि अगर आप सिर्फ बैंक अकाउंट्स की ही बात करो तो पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो 11% है, यानी कि सिर्फ 11% पाकिस्तान के लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं। ये फिनडेक्स के नंबर्स हैं। अभी एक खवातीन के नहीं 11% तो पूरी पॉपुलेशन के अंदर बैंक अकाउंट्स हैं। अच्छा, ये फिनडेक्स इसके अंदर खवातीन के कितने? खवातीन के 4.9 है। सो 5% खवातीन के पास बैंक अकाउंट्स हैं और आदमी जो है वो ज़्यादा है। आई थिंक 27% था, मुझे उनका नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए तो याद नहीं है पर टोटल 11%। ठीक है, तो अब कहते हैं कि जो ब्रांचलेस बैंकिंग है वो ज़्यादा आसान है, ब्रांचलेस बैंकिंग जो है वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगी। ये जो आपके बैंक अकाउंट्स खुलते हैं उस पर फिर वो वाला इशू आ जाता है जो मैं बात करी थी कि मोबाइल फ़ोन कितने लोगों के पास हैं। ठीक है ना, और फिर मोबाइल फ़ोन्स की जो सिमें हैं वो किसके नाम हैं। ठीक है, तो आप अगर GSM के नंबर्स देखें तो आप देखेंगे कि ख़वातीन की बहुत कम शरह है जिसके फ़ोन अपने हैं। ठीक है, और चलें बहुत कम शरह, सो 50% शरह है ऑलमोस्ट जिनके पास फ़ोन है। उनमें से कुछ के पास स्मार्टफोन्स हैं, कुछ के पास SSID या फीचर फ़ोन है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है ख़वातीन की जिनके सिम अपने नामों पे हैं। ठीक है, तो अब जब इस पे आप पैसा डालेंगे और मेरा सिम आपके नाम पे है या मेरा सिम उस्मान के नाम पे है, मेरे उची के नाम पे है, तो फिर मेरे पैसे पे उसका कंट्रोल होगा, राइट। और जो पावर डायनामिक है वो ऐसा होगा, क्योंकि ख़वातीन उन आदमियों का पावर डायनामिक ऐसा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस ऑफ वुमेन स्टेइंग वेरी मच बिहाइंड द कर्व। But there's some really interesting conversations on this tomorrow at the Econ Fest that's happening. Okay. Where we are talking about digital and what it means. Oh, interesting. Yeah. So what time is it? I'll try to come if I can, if it's open for people. I'll give you the flyer. Okay. Yeah. So ये है. So वहाँ पे इंडिया में भी ख़वातीन मार्शलाइज्ड हैं as far as access, but it's still better. ठीक है. आप देखें पाकिस्तान में तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ही खाली 22% है, जिसमें से मेजॉरिटी ख़वातीन एग्री सेक्टर में। तो यहाँ पे तो इन चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर होगा। मेरे जैसे इंसान को शायद बहुत फ़ायदा हो जाए, मुझे शायद कभी कैश ना कैरी करना पड़े, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे करना पड़ता है। लेकिन क्या कहते हैं, इसकी पॉजिटिव मल्टीप्लायर्स जो हैं वो हर तबके में नहीं होंगे। सो SEC A B C भी शायद फ़ायदा, DE के अंदर ये नहीं इतना अफेक्ट करेगा जब तक ये चीज़ें नहीं बदली जाती। And most of your population is in the DE. Yeah, is CDE. And I mean ये चीज़ें बदलना मुश्किल काम है, quite frankly. मतलब आप खातून को फ़ोन दे भी दें, so I mean one way of doing it is कि आप हर खातून को फ़ोन दे दें और उससे कहें ये तुम्हारा फ़ोन है, तुम्हारे नाम पे तुम्हारी सिम है, and then see के क्या होता है, right? उसके अलावा जो है ना टेक्नोलॉजी, और अब उससे ना टेक्नोलॉजी भी बहुत जेंडर्ड है। अच्छा, हाँ नहीं है तो सही। देखें इन्वेंट भी मारती करते हैं। हाँ, क्योंकि यूज़ केसेस नहीं होते ख़वातीन के लिए। हाँ, ठीक है ना। अब जब यूज़ केस नहीं होता ख़वातीन के लिए तो वो इस्तेमाल नहीं करती। जब वो इस्तेमाल नहीं करती तो वो उसकी कैंडी क्रश में ख़वातीन डोमिनेट करती हैं बाय द वे। लेकिन आप अपने यूजर्स देखें, आपके जो हैं, कितनी ख़वातीन हैं, कितने आदमी हैं। सेल फोन्स की नहीं, आपके चैनल की वो तो बहुत कम है। अब आपकी वजह से शायद और ख़वातीन देखने लग जाएं, कोई पता नहीं, राइट। बट पॉइंट बीइंग कि हर जगह पे ख़वातीन टेक में पीछे हैं। ठीक है, अगर आप टेक जॉब्स की बात करें तो वैसे 33% वर्ल्ड लेवल पे आप देखें तो ख़वातीन जो हैं वो वर्क प्लेस में हैं, राइट। लेकिन टेक में वो नंबर जो है 8% हो जाता है, टेक जॉब्स। सो एक मार्केट, वो वर्ल्ड प्लेस की मार्केट देखें तो 33% ख़वातीन है उसमें, और जो भी बचा पीछे 60 whatever yeah 67 lot big piece of the chunk। लेकिन उन 33% में से 6% जो है वो उसमें है। क्या कहते हैं? Do you think there's a biological determinism at play over here? Not at all. Not at all. We're going to deny this, of course. We're going to put it on society, right? It is. It is gendered. Because I had like this girl, Shafiqa Iqbal. She's from Sadqabad. She works at Google in Warsaw. And क्या कहते हैं? I was just like surprised
कि किस इन्वायरमेंट से किस तरह के एक ओपन माइंडेड ख्याल लड़की और उधर पहुंच के काम कर रही है. You know, even though India may probably be like, we've got CEOs, bro. You got one person working there and you're so happy about it. But and so that transformation has to occur in some way or the other, right? But um, she is somewhat of an outlier. And like even in sports and athleticism, You there's have the outliers. one-offs, right? You have Yeah. the one-off examples. You have, you know, the twin, the brother sister that's been summiting tops. Naam nahi yaad aa raha. Naila Kiani was here yesterday. She is summited K2. Yeah. Second girl is woman to summit K2. First woman to summit was Samina Beg. हाँ, समीना बेग की मैं बात अब समीना बेग जो है वो first woman after so many men had already done it. So it seems like it's just an occupation that's historically been something that men do, like athletics and stuff, and women have been domestic, right? So over years that's probably formed society, and so there's an interplay between the biological, the biology determines the societal thing, no? देखो नहीं, हाँ, there are biological differences. We will not, you know, we will not. I can't deny that. Nobody can deny that. But the way so we have assumptions about certain things that are done by certain genders, right? So क्या हुआ कि वो क्योंकि वो लोग कर रहे थे तो उनकी gender की जो characteristics थे वो उस job पे भी आ गया, ठीक है? So for example, चाय ख़वातीन अच्छी बनाती हैं, वो बनाती खाली ख़वातीन थी, ठीक है? मतलब आदमी औरतों के हाथों में और आंखों में और मेजर करने की एबिलिटी में और चूल्हा जलाने की एबिलिटी में तो कोई फर्क नहीं है ना. एक आदमी को रखो, ये हाथ तो सेम है, चूल्हा भी जलाना सेम है, दूध भी वही है, आंखों में शायद फर्क आ गया हो कि वो कश्मीरी चाय की जो क्योंकि supposedly women perceive colors better than men, right? सही है, लेकिन कश्मीरी चाय की बात नहीं करते, काली चाय की बात करते हैं. आ गई है कि नहीं आई वाली मतलब मैं मीन में एक निकाल रहा हूँ. हाँ, लेकिन देखो ना, मैं बड़ा लाइक फ्रिवलस सा एग्जांपल दे रही हूँ. तो होता क्या है कि आप चीज़ों को जेंडर कर देते हो. अब टीचर्स जो हैं, जब आप सोचते हो टीचर, तो अगर आप स्कूल की टीचर सोचो तो आपके जहन में बहुत सारी खवातीन आएंगी, ठीक है? वो जेंडर हो गया. लैंग्वेजेस ज़्यादा पढ़ाने वाली खवातीन मैंने नोट की हैं, ठीक है? और फिर मैथ पढ़ाने वाली ज़्यादातर स्टेम के अंदर, क्योंकि स्टेम में कम है, ठीक है? तो हाँ, खवातीन और मर्द फ़र्क है बायोलॉजिकली, बट क्या उनकी एबिलिटी टू डू थिंग्स फ़र्क है? नॉट रियली. बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक रोल से हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो सोसाइटी ने या हमने उनको इम्बाइब कर लिया है, और वो उन एक्सपेक्टेशंस पे हैं जो आदमियों की महारत है, क्योंकि आदमी ही करते थे, ठीक है? तो हमारे अंदर बहुत सारे सेकंड जनरेशन जेंडर बायसेस हैं. आई डोंट नो अगर आपने उनके बारे में सुना है कभी. एक तो फर्स्ट जनरेशन जेंडर बायसेस होते हैं, जहाँ पे आप कहते हो कि जी औरत को करना ही नहीं है, वोट ही नहीं करने देना, ठीक है? उसको स्कूल ही नहीं भेजना, ठीक है? उसको हायर ही नहीं करना. फिर आपके सेकंड जनरेशन जेंडर बायसेस आते हैं जो बड़े इम्प्लिसिट होते हैं और वो ईयर्स से बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आप उनको सोचते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो ऐसे. सो फॉर एग्जाम्पल, जब आपको मैं कहती हूँ कि लीडर या आपको कहती हूँ CEO, तो आपके जहन में क्या आता है? मर्द ही आता है ज़्यादातर. सूट पहना भी होता है उसने, टाई भी लगाई होती है, ठीक है? आउटलायर्स होते हैं, जिस तरह eBay की एक खातून थी एक ज़माने में, वो भी ठीक है, लेकिन वो आउटलायर है. लेकिन जो आप क्या वो जो काम कर रहे हैं एक CEO, वो औरत नहीं कर सकती? नहीं. लेकिन क्योंकि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते, तो आप इम्प्लिसिटली इस बायस को परपेचुएट कर भी रहे हो. ठीक है? और वो ट्रेनिंग करा के लोग चेंज भी कर देते हैं. लाइक मिसाल के तौर पे जॉर्डन पीटरसन सेज दिस कि खातून जो होती हैं उनकी असर्टिवनेस मेजरमेंट कम होती है मर्द से, एंड अगर उनको आप ट्रेन करो टू बी असर्टिव, तो वो जो काम की इन्वायरमेंट होती है उसमें अपनी वेजेस को ऊपर चढ़ाने के लिए लड़ बेहतर सकती है और उसको वेजेस मिल जाते हैं. ठीक है. मर्द पहले ही कर रहा होता है ये चीज़, क्योंकि उसका हिस्सा है ट्रेनिंग का, उसकी जेंडर कैटेगरी का. इसके साथ साथ उन्होंने शायद आपको ये नहीं बताया कि अगर आप लाइकेबिलिटी स्केल के ऊपर सेम असर्टिवनेस लेवल को आदमी और औरत की देखो, तो जो लाइकेबिलिटी आदमी की होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आदमी से हमारी दिस इज अ सेकंड जनरेशन बायस, बिकॉज वी डोंट वांट वुमेन टू बी असर्टिव. Right? So as a woman leader, you are always in this conundrum. You're either unliked or considered incompetent, because as a leader, I want you to be assertive. As a leader, I want you to speak your mind. As a leader, I want you to be decisive. But as a woman, I want you to be soft-spoken. I want you to be, like emotional. I want you to be warm. So when you're assertive, you are unliked. But when you're warm and fuzzy, then you are incompetent. Everywhere around the world, and you can, this is called a double binds, by the way. You can Google it. A double what? Double binds. Binds. Okay, got it. And in the context of gender.
everywhere that you will look at women leaders, this is what they have to deal with on a daily basis, right? And then देखो societal roles, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़वातीन बेहतर करती हैं, कुछ चीज़ें जो मर्द बेहतर करते हैं, right? But that doesn't mean कि वो औरतें नहीं कर सकती या आदमी नहीं कर सकते. So हम बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म ज़रूर है, फ़र्क है, लेकिन सोसाइटी जो है उसको ज़्यादा एक्सक्लूजनरी बना देती है. आपके अगर गूगल में नहीं ख़वातीन काम करती थी तो एक भी ना करती होती है. अगर बायोलॉजिकल मसला होता, दिमाग छोटा होता या जो भी होता, राइट, तो वो नहीं, कोई भी ना होती. Personality traits, like I mean, a corporate world that has mainly been the invention of man. That requires you to be assertive within it to get your rights. अगर वो दुनिया ही अगर थोड़ी बहुत बेहतर कर दी जाए कि वो आपकी assertion की वजह से आपको ऊपर नहीं promote करेगी, वो आपकी value contribution की वजह से आपको ऊपर करेगी, तो that world will be better as that well. world will also be better. The other thing is कि जब बच्चियाँ जो हैं वो अपना छोटी बच्चियाँ तो कहते हैं बड़ी बॉसी है. मेरी तो बेटी बॉसी है, मैं तो बड़ी खुश हूँ क्योंकि वो assertive है. उसको बस आप मिले हुए, she knows what she wants and she will tell you, right? And I don't think that when we were being raised or when our parents were being raised, the girls were raised this way. And I don't think they're being raised like this across the board also, right? So, like you are also priming the way that you are raising women. Were you raised the way you became? No. No? No. So then where did that come from? I don't know. Thanks to gods. Thanks to gods. Yeah. I saw some heroes, some female heroes that you kind of let you inform you that this is the way to be. Or STEM just, mein, did you have any heroes like that? I mean, generally there are parts like I also think that the conversations and like engaging with books and things, that was very formative for me. And having a bunch of gals who thought like me and supported me. I think that's been the most important. Like the Yaya sisterhood. Yeah, I mean, they're not Yayas. They're really competent, smart people. Yaya's not a bad word. Is it a bad word? I mean, they were a bit frivolous in that kind of movie, right? Achha, they were? I haven't seen the movie. I just used it as a phrase. Yeah, but so women supporting other women is very important, for example. And we don't see a lot of that. And then so like ये जो Disney princesses जो वजूद में आती हैं, ये आपकी सारी, like if you look at the fantasy that a man has of an attractive woman, it's a damsel in distress that needs to be protected or can be controlled and is not too opinionated about things, is the epitome of what an attractive woman is. And for women, it's the vampire, the werewolf, the guy or the beast. अच्छा, ये बड़ी generalizations है ना, ऐसे तो नहीं. हम बट बनाई गई है ना. अब वो भी सोसाइटी की एक particular mindset के through एक exaggeration of a fantasy of what's attractive has been put in front of you, so you can analyze it and you can go like, अच्छा, what is the type of man who has, जिसके पास power है, कुवत है, लेकिन वो abuse नहीं करता, is what's attractive. और vampire is actually the opposite. वो तो फिर आपको is more powerful than you. इसके पीछे एक और लॉजिक भी है ना कि अब क्योंकि आदमी तो बदतमीजी करते हैं, तो हम ये नैरेटिव भी बना देते हैं कि वो खवातीन की वजह से बदतमीजी करते हैं. Like they're bad boys because women want them to be bad boys. हाँ. So I mean, or they're bad boys who are the other argument is that the bad boys are like narcissist bad boys are those who imitate competence, and so young women who can't differentiate between actual competence and narcissism end up going for the narcissist because he's mimicking competence, but what they're actually attracted to is a competent man. हाँ, हो सकता है ना? That's okay, that's allowable ना? I mean, I don't know. I mean, this conversation has gone like somewhere that I have no idea, right? So I'm just like slowly processing कि हम क्या कहते हैं ख़वातीन की leadership issues से. मैं gender categories जो society के अंदर exist करती हैं उसकी extensions into sexual fantasies के अंदर गया हूँ बस. I am not an expert on. I haven't read up a lot about this, but yeah, generally I think that men get off very easy in all spheres of life. I've learned a lot today. Thank you so much for being here. Thanks. I mean, I think there's still a lot more that we could have spoken about in terms of microfinance. So yeah. I mean, I'm surprised there's कि अभी इसमें और भी बहुत ज़्यादा कुछ रहता है. मगर you'll come again, inshallah. We'll do it shortly. I'll get my since now I'll watch this. I'll learn a little bit more, so I'll have tougher questions for you. Chalo, I look forward to the tougher questions. But thanks for having me. This was fun. Pleasure is all mine. Thank you so much. And I shall see you later.